So the paper that we're solving today is Winter 2025, paper 4, variant 2. Okay. Rice Oryza sativa is a crop plant that has adapted to grow in flooded fields. Figure 1.1 outlines the effects on rice plants of growing in flooded fields. So we know that rice grows in flooded fields. So we have a flow chart, and that flow chart basically tells us the effect of growing in flooded fields on rice plant. So flooded fields have lower concentration of mineral ions and A in the soil available for absorption compared to non-flooded fields. What is something which is not present in abundance in water? What is something that is not easily found in water? Oxygen, very good. So A is basically oxygen. Lower concentration of mineral ions and oxygen in the soil available for absorption compared to non-flooded fields. So what does that lead to? High concentration of waste product B in root cells. What is a product which is formed in root cells, which is toxic and it is a waste product? Ethanol, very good. So when we talk about the adaptations of rice plants, we've studied that one of the adaptations of rice plants to survive in flooded fields is the ability of their roots, because roots वो part है जो completely submerged होता है आपके water में, because a certain part of stem and obviously जो आपका leafy part होगा वो सारा part, a certain amount of it is present above the water, but roots are completely submerged in the water. So उनके पास क्या कहते हैं, ऑक्सीजन आती है, बट वो ऑक्सीजन आती है एरन के थ्रू। एरन कायमा के थ्रू ऑक्सीजन आती है जिसके थ्रू वो एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट कर पाते हैं। हाउएवर दे स्टिल हैव द एबिलिटी टू कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होती है या फंगाई में होती है वो अल्कोहल फर्मेंटेशन या इथेनॉल फर्मेंटेशन होती है। इथेनॉल इज टॉक्सिक फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। सो हमारे पास जल्दी से जो हमारी रूट सेल्स होती हैं जैसे ही उनमें इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, alcohol dehydrogenase enzyme breaks down that ethanol into a less toxic substance. So this is an adaptation which helps the rice plants to thrive within flooded fields. So this would be ethanol. Presence of tissue C in stems and roots. So the presence of tissue C, that tissue is basically your aerenchyma tissue. It's a network of air spaces which moves from the stem. Stem का certain part exposed होता है to the air. तो air में जो हमारे पास है कहते हैं ऑक्सीजन है वो एंटर करती है एयर स्पेसेस में जो कि एरनकाइमा है, एंड दोज एयर स्पेसेस, दैट नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस लीड्स ऑल द वे डाउन टू द रूट्स, and through the erenchyma the roots receive oxygen and they're able to carry out aerobic respiration. So with reference to figure 1.1, name substance A. Substance A is oxygen, substance B is ethanol, and tissue C is erenchyma. Describe how root cells respond to a high concentration of substance B. So I just mentioned that root cells break down ethanol into a less toxic substance via alcohol dehydrogenase. It is also known as ethanol dehydrogenase. So both terms are acceptable in your syllabus. मैंने ethanol कहाँ लिखा है? It's ethanol, not ethanol. Oh, the two-step process. कि हमारे पास ethanol is further dehydrogenated into ethanol. That's what you guys are asking. Okay. So when we talk about हमारे पास क्या कहते हैं, the action of the enzyme ethanol dehydrogenase, हमारे पास क्या कहती हैं? We don't, our syllabus does not explicitly mentions कि हमारे पास ethanol को किस substance में break down किया जाता है. हमें ये पता है that ethanol is converted to ethanol by the alcohol dehydrogenase enzyme. पर जब ethanol को alcohol dehydrogenase convert करती है वो किस substance में convert करती है, that is not part of our syllabus. That is not explicitly mentioned in our syllabus. ठीक है? Now next part. Gibberellin is involved in the growth of stems in rice plants. Figure 1.2 shows the effect of gibberellin concentration on the length of stems in rice plant. So we have the concentration of gibberellin on the x-axis
And we have the length of stem on the y-axis. Describe the relationship shown in figure 1.2. जब भी describe की बात होती है, we only talk about the trend that we are seeing and we quote values. We don't go into the biology of it. So we answer as if we are a data analyst and not a biologist. So what trend are we seeing? How is concentration of gibberellin affecting the length of stem? Is it positively affecting it, increasing it? What's happening? So as the concentration of gibberellin increases, the length of the stem is also increasing. That's the relationship. And then we'll quote data values. हमारे पास हम कोई से भी दो डेटा पॉइंट्स लेंगे जब भी हम डेटा कोड करते हैं वी हैव टू गिव two paired data. What do I mean by paired data? हमारे पास let's say if I'm using the data at 1 AU of gibberellin, so मेरे पास obviously 1 would be my x-axis quantity. उस x-axis quantity का मैं y-axis भी बता रही होंगी. So this y-axis would be 1 and no, sorry, this is 2 and 4, 2 and 4 के बीच में, so this is 3. So हमारे पास क्या कहते हैं we'd say that at 1 AU of gibberellin हमारे पास 3 millimeter height थी and let's say फिर हम 5 का दे देते हैं that at 5 AU of gibberellin our height was 52. So this is one pair, this is one pair. So whenever we're quoting data, we give two paired data points. ठीक है? To increase in the concentration of gibberellin increases the length of stem at 3 arbitrary units of gibberellin. The length was 3 millimeter, and at 5 arbitrary units of gibberellin, the length was 52 millimeters. So 1 point for stating the relationship, the trend, and another point for quoting two paired data codes. Okay, I am hoping that I haven't missed any question. Was there any question? No, you guys cannot write short forms. Short forms are not allowed. Until and unless वो short forms जो आपके syllabus में use की गई हैं आप वो use कर सकते हो. Gibberellin की short form use नहीं की गई, so आप वो use नहीं कर सकते. So the short forms that are already mentioned in your LOs, you can use those. The ones which are not mentioned in your LOs, you cannot use those. Yeah, paired means that one pair is XY, तो वो आपका एक paired data है. दूसरा pair data would be another XY that you are mentioning. So when we are writing data, we have to add two paired data codes. ठीक है? So this is our one pair and this is another pair. ABA, abscisic acid in rice plant cells inhibits the action of gibberellin. So if ABA is present, gibberellin would not work. With reference to figure 1.1 and figure 1.2, explain the importance of ethylene production for the growth of rice plants in flooded fields. Now let's go to figure 1.1. Figure 1.1 is stating that हमारे पास जो production of ethylene होती है, which is basically ethene. The production of ethene causes the breakdown of abscisic acid, which means कि abscisic acid की concentration कम हो रही है. Abscisic acid की concentration अगर कम हो रही है, if the abscisic acid's concentration is decreasing, that means that the functionality of gibberellin would not be inhibited. It would be functioning normally, वो अपना काम कर सकेगा. और अगर gibberellin अपना काम कर रहा है तो हमने फिगर 1.2 पे क्या देखा? फिगर 1.2 पे हमने देखा कि जैसे जैसे gibberellin काम करता है वैसे वैसे हमारे पास length increase कर दिया. So the significance of ethylene production is that it causes the breakdown of abscisic acid, which in turn ensures that gibberellin is not inhibited, gibberellin remains active, gibberellin remains functional.
If the gibberellin is remaining functional, that would ensure that the rice plants are growing, the length of their stem is increasing. Now, ये तो हमने फिगर 1.1 और फिगर 1.2 से दो रीजंस दे दिया. अब अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज कर रहा है, why is it important for the length of the stem to increase for any plant as a matter of fact? किसी भी प्लांट के स्टेम के ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट होती है? हम स्टेम एलोंगेशन पढ़ के आए हैं इनहेरिटेंस में. जितना हमारे पास स्टॉलर प्लांट होगा उतना ज्यादा वो उसकी क्या कहते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, बिकॉज इट वुड बी इजियर टू एक्सेस लाइट. तो हमारे पास जो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी ज्यादा होगी. जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू राइस प्लांट, तो हमारे पास ज्यादा जितना ज्यादा स्टेम एलोंगेट होगा उतना ज्यादा हमारे पास स्टेम का जो पार्ट है इट वुड बी हेल्ड अबव द ग्राउंड. So हमारे पास it would be held above the ground, it would be taller, which would make light more accessible, increasing the overall efficiency of the photosynthesis. Make sense? Okay, I'll quickly skim through the chat box. Okay, perfect. Let's move to the next part. Explain the terms gene, genotype, and phenotype. Very easy. Gene is basically sequence of DNA nucleotides which codes for a particular polypeptide. Genotype is basically all the alleles present in your genetic makeup of an organism. So, genotype, all the alleles of all the genes in an organism. For definitions, please refer to the glossary that I've shared on the group, because आपकी जो definitions होती हैं in your MS, they're exactly from your glossary, जो आपकी Mary Jones की glossary है, which I have shared the PDF with you all. So जब भी कोई भी definition आए, refer to that. Phenotype are all the observable characteristics of an organism. A monohybrid genetic cross can be carried out to produce an F1 and an F2 generation. Outline how a monohybrid genetic cross is carried out. State the expected percentage of each of the different offspring genotypes in the F2 generation. Assume that the inheritance pattern is for autosomal dominant and recessive alleles, which means that they're being inherited together. Okay, so autosomal dominant and recessive alleles are basically inherited together. However, this is more of a misleading statement, क्योंकि हमारे पास बेसिकली हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास क्या कहते हैं जो F1 एंड F2 जनरेशन होती है वो किस तरह से फॉर्म होती है. हमारे पास क्या कहते हैं, what's the F1 generation? How do we define an F1 generation? Okay, and is there something unique about the parents from which the F1 generation is formed? Very good, Neil. So that's what the definition of F1 generation is. F1 generation is basically the offsprings from the cross between a homozygous recessive and a homozygous dominant, and all the offsprings in the F1 generation are heterozygous. So हमारे पास F1 generation is actually a generation in which all the offsprings are heterozygous because they are born as a result of a cross between homozygous recessive and homozygous dominant parent. ठीक है? So that's your F1 generation. Now, all the offsprings in the F1 generation are heterozygous. So when heterozygous individuals cross together, हमारे पास जो ratio होता है वो क्या होता है? हमारे पास no, I'm not asking about F1, I'm asking about F2. अच्छा, इसको हम step by step करते हैं. पहले हम F1 का लिखते हैं.
So F1 generation is formed from a cross between between a homozygous dominant parent and a homozygous रिसेसिव पेरेंट. हम इसको एक क्रॉस से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे फॉर्म होगा. सो लेट से हम ए ए crossing with AA form करते हैं. So all the individuals would be heterozygous. So all individuals of F1 generation are heterozygous. The F1 heterozygotes breed together to produce the F2 generation. Now let's see the genotype ratio. हमें genotype ratio basically F2 का बताना है. So हमारे पास a heterozygote is meeting with a heterozygote. अब हमारे पास possibilities क्या होंगी? Capital A, capital A, capital A, small a, another capital A and another small a, small a. Now हमारे पास genotype ratio क्या है? 1 is to 2 is to 1. Does that make sense? Okay. Let me quickly go through the chat. 9 is to 3 is to 3 is to 1 is seen in F2 if it would have been a dihybrid genetic cross. अगर यहाँ पर हमारे पास dihybrid का वो पूछते तो हमारे पास dihybrid की जो F2 होती है वो 9 is to 3 is to 3 is to 1 होती है. So the genotype of F2 generation, the ratios, okay. The genotype ratio of F2 generation is 1 is to 2 is to 1. I am pretty sure मैंने 5 marking points से ज़्यादा ही लिख दिए होंगे. These are up to 6 to 7 marking points if I'm not mistaken. आपके पास क्या कहती हैं homozygous dominant और homozygous recessive पे आपको क्या कहते हैं 1 mark मिलेगा. All F1 generation are heterozygous उस पे आपको आपका second marking point मिलेगा. F1 join together, sorry, cross together to form the F2 generation would be your third marking point. फिर उसके बाद क्या कहती हैं genotype ratio would be your fourth marking point and ये crosses का word use करने के लिए आपको एक एक mark मिलेगा. So these are total 6 marking points that you are seeing on the screen. ठीक है? Any questions? Can we proceed to the next part? Pretty straightforward. इस पेपर के शुरू के सवाल बहुत आसान है. ये प्रोग्रेसिवली थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जाएगा. इतना मुश्किल नहीं है. We are starting off with a rather easier paper. Right before the answer, assume that the inheritance pattern is for autosomal dominant and recessive values. Is that what you're asking? Okay. This basically means कि हमारे पास हम जिस gene की बात कर रहे हैं, they are basically on the same chromosome. They are basically not affected by random assortment. क्योंकि अगर random assortment होती तो genetic variation आ जाती. या हमारे पास क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारे पास डिफरेंट गमीट्स बनना शुरू हो जाता है. दैट्स व्हाट दे मीन. इसमें इट्स मोर ऑफ अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कि बच्चे घबरा जाएं जबकि इतना रेलेवेंट नहीं है इसका यहाँ पर. और ओके अच्छा जी. Honestly, I'm finding the variant twos of the paper comparatively easier वैसे. Yes, it would have been slightly different and more complex units. The variant twos are comparatively easy. Variant 1 and 3 are comparatively hard. That is what I'm seeing.
Even that's true for AS as well. And also, I don't know if you've seen the AS paper that we solved. It was May, June 2025 yesterday that we solved. You weren't in the class. So it was very easy, very easy. Anyways, question number 3. The lac operon is present in the genome of the bacterium Escherichia coli, E. coli basically. When glucose is not available, the presence of lactose in the extracellular environment leads to the expression of the genes of the lac operon. So हमारे पास we know कि presence of lactose ही की वजह से lac operon की जो genes हैं उनका expression trigger होता है. यहाँ पर हमें जो नई इन्फॉर्मेशन पता चली है इस क्वेश्चन में वो ये पता चली है कि लैक्टोज का इन्फ्लुएंस the lactose which is present in the extracellular environment can influence the expression of the lac operon genes only when the glucose is not available. So glucose has a role in how lactose hydrolysis occurs within E. coli. This leads to an increase in the uptake and metabolism of lactose. तो हमारे पास जब lactoperon की genes express होती हैं तो हमारे पास lactose permeability increase हो जाती है. जो हमारे पास Y gene होती है वो lactose permease को कोड करती है, which basically increases the overall permeability of the bacteria to lactose. When glucose and lactose are available in the extracellular medium, lactose is prevented from entering the bacterial cell. So, in the presence of glucose, lactose cannot enter within the bacterial cell. Figure 3.1 shows what happens when glucose enters a bacterial cell. Glucose enters a bacterial cell using a transport protein called A. So, glucose has entered. हमारे पास ग्लूकोज की एंट्री के साथ ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप ट्रिगर हो गया which is phosphorylation. B is an enzyme found in the cytoplasm of the bacterial cell. So this is B, an enzyme which is found in the cytoplasm of bacterial cell. It catalyzes the phosphorylation of glucose to produce glucose 6 phosphate. अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं जो हमारा जैसे ही phosphorylation of glucose होती है to glucose 6 phosphate, the enzyme B is dephosphorylated and the dephosphorylated enzyme B attaches to lactose permease. And this basically जैसे ही हमारे पास enzyme B lactose permease से attach कर दिया, what happens is the entry of lactose is prevented inside the bacterial cell. Does that make sense so far? Any questions? Any confusions? Okay, I'll repeat. So basically, I'm explaining the diagram which they have shown. उन्होंने हमें detail क्या दी है? They have told us that in the presence of glucose, lactose cannot enter inside the bacterial cell. They have basically in the figure outlined how is this happening. So we are seeing over here, follow the arrows. हमारे पास जो glucose है, the glucose has entered the cytoplasm. When the glucose entered the cytoplasm of the bacterial cell, what happened was ग्लूकोज एंटर हुआ, ग्लाइकोलिसिस ट्रिगर हो गया. ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है दैट ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, हमारे पास एक एंजाइम है, एंजाइम बी, उसका नाम हमें नहीं पता, उसका नाम उन्होंने नहीं बताया. द एंजाइम is responsible for the phosphorylation of glucose. We can see कि हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप था इस एंजाइम बी के पास. वो फॉस्फेट ग्रुप एंजाइम बी ने किसको दे दिया? ग्लूकोज को दे दिया. सो द फॉस्फेट ग्रुप एडेड टू द ग्लूकोज. So glucose plus the phosphate group form the glucose 6 phosphate. Where was this phosphate coming from? This phosphate was coming from the enzyme B. Once the enzyme B lost its phosphate, can you see this arrow that the dephosphorylated enzyme B is moving towards lactose permease? Now, when the enzyme B is moving towards the lactose permease, they're telling us that this prevents lactose from entering inside the bacterial cell. Does that now make sense, Eamon? Okay. फिर हमारे पास क्या कहती हैं, उन्होंने हमें लैक ओपेरॉन की भी एक पिक्चर दिखाई दिया. We know that lac I code for a repressor protein and only in the presence of lactose is this repressor protein removed and the transcription of these lac genes are triggered, laczia genes. With reference to figure 3.1, suggest and explain how the presence of glucose in the extracellular environment prevents lactose entering the bacterial cell. तो हमने जो मैंने आप लोगों को explain किया है figure 3.1 को, हमने पूरी figure 3.1 को explain करना है इस answer में. So we have to tell what's happening in the figure 3.1 and from that figure we have to explain how the presence of glucose
in the extracellular environment prevents lactose entering the bacterial cell. तो हमने स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन करना है कि हमारे पास ग्लूकोज की एंट्री की वजह से what is happening which is leading to the lactose not entering within the bacterial cell. So look at this diagram. मैं explain भी कर चुकी हूँ. Tell me, how would you phrase your answer? It is a 3-marker question. How would you explain this diagram? कि इस diagram के through हमें क्या समझ आ रहा है? किस तरह से glucose की presence in the extracellular environment is preventing the entry of lactose. I have literally explained everything. You guys just have to show me how you would write it at the exam. So I'm giving you guys like 4 minutes. Actually, 3 minutes are enough. Write it. In the meanwhile, I'll drink my coffee. If you guys want, I can also show you guys the question as well. The question we should do. Okay, let's read your answers. So glucose, upon entering, undergoes glycolysis, forming glucose 6-phosphate, which what happens because of enzyme B that is phosphorylating it. By removing the phosphate from itself, the enzyme B then moves towards the lactose permease, preventing the entry of lactose. Okay, makes sense. The presence of glucose in extracellular environment leads to facilitated diffusion inside the cell. Concentration gradient is maintained by the phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate. On presence of enzyme B, which then loses its phosphate and binds to lactose permease strand protein, preventing its entry. Okay. Fine enough. As glucose enters the cell, glycolysis takes place. अच्छा, tell me, हमारे पास क्या कहते हैं? If the enzyme B is binding to the lactose permease, which basically is a transport protein allowing the entry of lactose, why is it or what is basically happening for the lactose not to enter through the lactose permease? Lactose permease वहीं पर है. उससे एक एंजाइम भी आकर अटैच हुई है. उस अटैचमेंट ने ऐसा क्या किया है कि एक चीज जो मूव कर सकती थी लैक्टोज permease से वो अब उसे मूव नहीं कर पा रही है. Change in the shape of lactose permease. Very good. अच्छा, हमारे पास ये कहते हैं somebody, some of you have used the word competitive inhibitor, some of you have used the word non-competitive inhibitor. Now, do we have any information कि हमारे पास क्या कहते हैं किस चीज के थ्रू हम बता सकते हैं कि competitive inhibitor होगा या non-competitive inhibitor होगा? What parts? This is some test of your AS knowledge. अगर आप ये mention नहीं भी करोगे, so you're not going to lose your 3 marks. 3 marks सबको मिलना. जितने भी answers मैंने पढ़े, all of you, and I've read all the answers, you all are getting 3 marks. ठीक है? But just an additional point कि हमारे पास क्या कहती हैं जो lactose है, lactose is basically the substrate of our lactose permease, and this lactose can no longer enter through the lactose permease. तो हमारे पास somebody mentioned कि हमारा shape change होगा, right? Do we all agree कि हमारे पास shape change हो रहा होगा हमारे transport protein का? Is there anybody who disagrees with it? Everybody agrees that हमारे पास shape change हो रहा है, that is why lactose is not entering. Okay. What type of a inhibitor is responsible for the change of shape of an enzyme? Non-competitive. So ये आपका ऐसा नहीं है अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं करेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे बिकॉज 3 मार्कर है. बट ये अगर 4 मार्कर होता या 5 मार्कर होता तो उसमें हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते थे that the enzyme B is causing a shape of the enzyme to change, and that is achieved by a non-competitive inhibitor. So it can be said that enzyme B is a non-competitive inhibitor of lactose permease. Does that make sense? Yeah, you can say that. Allosteric change आ रहा है, allosteric site से bind कर रहा है, we can say that. Okay. Suggest the advantages for the bacterial cell in preventing the entry of lactose when glucose is present.
in the extracellular environment. अच्छा, lactose क्या है? Lactose is sugar है. Lactose is made up of which two monosaccharides? Biological molecules. Yes. Lactose किन दो monosaccharides से बनी होती है? Yes, Sadisha, that's correct. The location would have been same because competitive inhibition में same site पर दोनों चीजें बाइंड करती हैं. Obviously हमारे पास क्या कहते हैं जो एंजाइम बी है वो साइटोप्लाज्म की तरफ है. लैक्टोज एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से आ रहा है तो जाहिर सी बात है पोजीशन सेम नहीं हो सकती. सो सेम साइट पर तो दोनों बाइंड नहीं करे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. हम कोई भी शुगर इसलिए कंज्यूम करते हैं चाहे पॉलीसैकेराइड हो या डाइसैकेराइड हो ताकि वो इवेंचुअली ब्रेक डाउन कर जाए हाइड्रोलाइज कर जाए ग्लूकोज में ताकि हम ग्लूकोज को रिस्पायर कर सकें. इज दैट करेक्ट? That consumption of any polysaccharide or disaccharide is essentially to go down to glucose for respiration. Okay. लैक्टोज की एंट्री कब प्रिवेंट होती है? जब ग्लूकोज प्रेजेंट होती है. सो एक तरह से हमारे पास अगर ग्लूकोज मौजूद है तो हमें लैक्टोज की एसेंशियली जरूरत नहीं है. बट इससे सेल को क्या फायदा है? सेल को ये फायदा है कि हमारे पास क्या कहती हैं, जब लैक्टोज आता है तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक जी, लैक वाई, लैक ए ट्रिगर होती है. इज दैट करेक्ट? That the presence of lactose causes the repressor to unbind from the operator side and allows the expression of the genes Z, Y, A. If glucose is present, we do not the cell does not essentially need lactose because lactose eventually glucose और galactose में break down करेगी और glucose use होगा respiration में. So अगर glucose present है तो हम glucose को respire कर रहे हैं, right? Okay. जब lactose enter करता है, lactose bind करता है repressor protein के साथ और जब हमारे पास repressor protein के साथ वो bind करता है, repressor protein remove हो जाता है और हमारे पास transcription of LAC Z, LAC Y and LAC A is triggered. Transcription active process होता है कि passive process होता है? It's an active process, which means that ATP would be needed. हमारे पास क्या कहती हैं, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है हमें लैक्टोज की नीड नहीं है. तो अगर लैक्टोज की नीड नहीं है और लैक्टोज एंटर होगी तो बिला वजह हमारे पास इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर होगी. इन जीन्स की जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर होगी सो द सेल वुड lose ATP and it is losing ATP in a process which is not needed. तो एक तरह से वो जो ATP है वो waste हो रहा है. Does that make sense? So the advantage for the bacterial cell in preventing the entry of lactose when glucose is present in the extracellular environment ensures that the protein synthesis or the transcription of the LAC-Z, LAC-Y, LAC-A genes is not triggered, which in turn saves ATP's wastage. ठीक है? So this results in the genes LAC-Z, LAC-Y, and LAC-A to not be transcribed. Is there a lac operon in eukaryotic cells? Have we studied lac operon in eukaryotic cells? Lac operon or operon for that matter are studied with respect to bacterial cells in our syllabus. हमने lactose metabolism humans का पढ़ा ही नहीं है. Yeah, if there is no lactose in the bacterial cell, there would be no transcription of LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. The glucose 6-phosphate in the cytoplasm of the bacterial cell is used to produce fructose 1,6-bisphosphate. Fructose 1,6-bisphosphate is used in glycolysis. Outline the events that occur in glycolysis following the production of fructose 1,6-bisphosphate. So we have fructose 1,6-bisphosphate. What happens to it? It undergoes lysis to produce 2 moles of triose phosphate. So 2 moles of triose phosphate are formed. Each triose phosphate molecules undergoes the process of dehydrogenation. So it undergoes dehydrogenation and forms pyruvate. So 2 molecules of pyruvate are formed. And we have a net 2 moles of ATP being produced, or you can say a total of 4 ATPs are being produced. So आपकी मर्जी, आप 2 moles के बारे में लिखना चाहते हो या 4 moles के बारे में लिखना चाहते हो. अगर आप 2 moles लिख रहे हो, so you have to use the word
net 2 moles of ATP are formed, or you can say that as a whole 4 ATPs are formed during dehydrogenation. और हमारे पास क्या कहते हैं 2 moles of NADH भी बनते हैं, तो हम NADH की भी बात कर सकते हैं. So 2 moles of NADH are formed during dehydrogenation. So these are the steps which occur after fructose 1,6 bisphosphate has been formed. Clear है? Pretty straightforward. Okay. E. coli is present in the gut intestines of young mammals. The diet of young mammals contains lactose, which is present in the milk they consume. So basically, I've also told, एक second, just a second. अच्छा, so हमारे पास क्या कहती हैं जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं या जो हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है, मैंने उसके बारे में गुड बैक्टीरिया की बात की होगी एट सम पॉइंट, मे बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के टाइम पर. बट बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर कंटिन्यूसली एक लेयर ऑफ बैक्टीरिया होती है विच इज गुड बैक्टीरिया टू अस. उसको हम गुड बैक्टीरिया नहीं, उसको हम बुलाते हैं फ्लोरा ऑफ द स्किन. और विद इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, in our gut we have bacteria which are important to us. They help us in फॉर्मिंग विटामिन के एंड एवरीथिंग. तो हमारे पास नेचुरली मैमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो सिम्बायोटिकली रह रहे होते हैं, वो हमें कोई डिजीज कॉज नहीं करता. ठीक है. सो E. coli is present in the gut of young mammals. The diet of young mammals contains lactose, which is present in the milk they consume. So we get lactose from the milk that we're consuming. Scientists carried out an experiment using E. coli with a lac operon, which they called lac plus E. coli, and E. coli without a lac operon, which they called the lac minus E. coli. So they took two E. coli, one which has a lac operon, which can express the genes needed for lactose metabolism, and they took a group of E. coli which did not have lac operon and they could not transcribe or express genes which are essential for lactose metabolism. The experiment was carried out to determine whether the presence of a lac operon gives E. coli a selective advantage. Selective advantage का क्या मतलब है? उनकी जो presence है या उनके जो numbers हैं, वो क्या कहती हैं lac operon होने की वजह से increase करती हैं कि नहीं? उनको कोई survival advantage है lac operon होने की वजह से या survival advantage नहीं है? So equal numbers of lac plus E. coli and lac minus E. coli were given to 8 mice to allow the bacteria to colonize the gut. So हमारे पास हमने ऐसे E. coli भी mice को दिया जिसमें lac operon present था, and हमारे पास हमने lac minus वाले भी बैक्टीरिया mice में introduce करवाए. On day 0, 50% of the E. coli in the gut of each mouse were lac plus E. coli. 4 mice were fed a standard diet that included lactose. 4 mice were fed a standard diet without lactose. The presence of lac plus E. coli that were in the gut of each mouse was determined every day for 6 days. So हमने mouse को lactose, 4 mice को हमने क्या कहते हैं lactose दी, और 4 mice को हमने lactose नहीं दी. And over a period of 6 days, we saw that how each of the mice had the percentage of lac plus E. coli in their gut. So I'll scroll it down. Now over here, what we are seeing is that the percentage of E. coli that are lac plus is significantly increasing in those mice which were fed lactose. And हमारे पास जो increase है, वो subtle सा है initially, जब no lactose थी, and then decrease आया in the percentage of E. coli that are lac plus. और हमारे पास क्या कहते हैं comparatively lactose की presence में the E. coli that had lac operon thrived, and in the absence of lactose the E. coli which had lac operon comparatively did not thrive as much. Does that make sense? So हम कह सकते हैं कि इन इकोलाई बैक्टीरिया को सर्वाइवल एडवांटेज सिर्फ लैक्टोज की प्रेजेंस में है, लैक्टोज की एब्सेंस में सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है उन इकोलाई को जिनके पास लैक ओपेरॉन है. कैन वी से that in this case they have a survival advantage, in this case they really don't have a survival advantage? नहीं, हमारे पास जो डेटा है वो खाली लैक प्लस का ही है, लैक माइनस का उन्होंने डेटा नहीं दिया है हमें. सी हमारे पास खाली लैक प्लस का ग्राफ प्लॉट हुआ है इन 2 कंडीशंस.
हमारे पास जो 4 माइस थे जिनको हमने लैक्टोज दी थी, उनमें लैक प्लस इकोलाई कितने बढ़े हैं, और हमारे पास वो माइस जिनको हमने लैक्टोज नहीं दी थी, उनमें इकोलाई कितने बढ़े हैं। हमारे पास इकोलाई विद लैक ओपरॉन कितने बढ़े हैं, उसका डेटा है हमारे पास। लैक माइनस का डेटा उन्होंने ग्राफ पे शो नहीं किया हुआ। ठीक है खदीजा? श्योर। If you guys want to read the scenario again, I can give you guys like a minute. You guys can go over it again and then we'll move towards the question. With reference to figure 3.2, describe the effect of the different diets. Different diets matlab was lactose present or was lactose absent. Describe the effect of the different diets on the percentage of E. coli that are lac plus. So हम क्या कहती हैं, लैक्टोज प्रेजेंट थी डाइट में उसका भी डेटा देंगे, और अगर लैक्टोज एब्सेंट थी डाइट में उसका भी डेटा देंगे. So over the 6 days, what we are observing is that if lactose is present in the diet, the overall percentage of E. coli that are lac plus has increased. For those E. coli which had lac operon but did not receive lactose in diet, their percentage showed an initial increase, which was not that significant. So there was a little increase initially. However, after day 3, there was a decline in the percentage of E. coli. We can write that. ठीक है? हम obviously comparative data points भी दे सकते हैं. हमारे पास जब एक ग्राफ पे दो लाइंस हो, तो हमने एक ही पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर क्या वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं वो देनी होती है. सो हमें कंपैरेटिव डेटा देना होता है अगर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स का ग्राफ प्रेजेंट है. अगर एक ही ग्राफ प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम ऑब्वियसली कंपैरेटिव डेटा नहीं देते, हम पेयर डेटा देते हैं. बट हमारे पास क्या कहते हैं, जब एक ग्राफ मौजूद है और उस ग्राफ पे हमें दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का ट्रेंड दिखाया गया है, सो एट अ गिवन टाइम और एट अ गिवन एक्स एक्सिस क्वांटिटी, उन दोनों ग्रुप्स की वाई एक्सिस क्वांटिटीज क्या हैं, हमें उन दोनों का कंपैरिजन करना होता है. सो हम डे 1 और डे 6 पर कंपेयर करते हैं कि लैक्टोज अगर दी थी तो डे 1 और डे 6 पे क्या परसेंटेज थी, और लैक्टोज होने और ना होने से हमारे पास 6 डे पर क्या परसेंटेज थी. So this value is 1, 2, this is 54, and this is 1, 2, 65. So we have 65 and we have 54, and on day 6 we have, this would be 1, 2, 3, 4. This is 57. And this is 1, 2, 3, 86. Okay. So we'd write these data points. Okay. Next part. The scientists concluded that lac plus E. coli had a selective advantage when colonizing the gut, but only in the presence of lactose. Suggest why the presence of lactose caused lac plus E. coli to have a selective advantage. अगर हमारे पास lactose होगी तो lactose metabolism होगा, which means that हमारे पास क्या कहती हैं, लैक्टोज ब्रेक डाउन करेगी, एंड जब लैक्टोज ब्रेक डाउन करेगी तो हमारे पास जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, दैट ग्लूकोज वुड बी रेस्पायर्ड. नाउ हमारे पास लैक्टोज की प्रेजेंस का असर लैक प्लस इकोलाई को ही होगा, लैक माइनस इकोलाई को नहीं होगा, राइट? तो हमारे पास क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इज डिटर्मिनिंग वेदर वन ऑफ द फिनोटाइप इज एडवांटेजियस और नॉट. सो एक तरह से हम ये कह सकते हैं दैट प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर. कैन वी से दैट अगर हमें कंपटीशन करें लैक प्लस और लैक माइनस वाले इकोलाई का, एक कंपटीशन तभी जीतेगा अगर प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज होगी. लैक्टोज अगर हम दोनों को नहीं दे रहे हैं तो दोनों के दरमियान कोई कंपटीशन होगा नहीं, राइट? द डिटर्मिनिंग फैक्टर वुड बी द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जिसमें एक को फायदा होगा और दूसरे को नहीं होगा. सो हमारे पास वो इन्वायरमेंटल कॉज जो कि डिटर्मिनिंग फैक्टर होती है for one phenotype to thrive and for the other to not thrive. What do we call that factor? We're talking in terms of selective advantage, selection evolution.
सिलेक्शन प्रेशर। तो हमारे पास सिलेक्शन प्रेशर क्या है? हमारे पास सिलेक्शन प्रेशर इज द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की प्रेजेंस वुड एक्ट एज अ सिलेक्शन प्रेशर। Why is it acting as a selection pressure? Because only lac plus E. coli can transcribe LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, the genes which are responsible for lactose hydrolysis. अगर lactose present है भी तो lac minus E. coli, because they do not have lac operon, lactose होने के बावजूद भी क्या lac minus E. coli lactose hydrolysis कर सकता? Can lac minus E. coli carry out lactose hydrolysis if lactose is present in the environment? Okay, no, right? अगर उनके पास लैक ओपरॉन नहीं है, दैट मीन्स वो क्या कहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोस्पेरमीज, ये वाली एंजाइम्स की जीन्स उनके पास नहीं है, राइट? सो अगर उनके पास वो जीन्स नहीं है, सो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो लैक्टोस्पेरमीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो जीन्स ही नहीं है. No beta galactosidase and no lactose permease. Is that correct? इनके पास ability नहीं है इन enzymes को produce करने की. अगर ये enzymes ये produce नहीं कर सकते, they essentially cannot hydrolyze lactose. Is that correct? Now, if they cannot hydrolyze lactose, हमारे पास let's say हम assume करें कि ग्लूकोज खत्म हो गया है external environment में, खाली lactose बचा है. In that case, lac plus E. coli would be able to survive or lac minus E. coli would be able to survive. लैक्टोज की प्रेजेंस में और बाकी सारी शुगर्स खत्म हो गई हैं, खाली लैक्टोज प्रेजेंट है अवेलेबल, कौन से वाले सर्वाइव कर पाएंगे? लैक प्लस या लैक सॉरी लैक प्लस या लैक माइनस? लैक प्लस सर्वाइव कर पाएंगे. डू वी ऑल एग्री विद दिस? सो वी वुड से दैट इफ देयर इज glucose absent and only lactose is present, lactose acts as a selection pressure. Why? Because lac plus E. coli can take in and hydrolyze lactose to use it as an energy source, whereas lac minus E. coli cannot take in and hydrolyze lactose and use it as an energy source. Make sense? Anybody who's confused? Anybody who wants me to repeat this? Okay. मैं फिर से explain करती हूँ. For those of you who understood it, can leave the meeting. Kharira, I'll explain it again. And for those of you who also want me to repeat, मैं फिर से समझाती हूँ. Question हमसे क्या कह रहा है? The scientists concluded lac plus E. coli had a selective advantage when colonizing the bacteria, when colonizing the gut, but only in the presence of lactose. Lac plus E. coli के पास selective advantage है, बिल्कुल है. लेकिन ये सेलेक्टिव एडवांटेज सिर्फ तभी होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो. ये स्टेटमेंट समझ आई खतीजा? That lac plus E. coli only have a selective advantage if lactose is present. Right. Suggest why the presence of lactose caused lac plus E. coli to have a selective advantage. हमने ये बताना है कि लैक्टोज की मौजूदगी में क्यों lac plus E. coli के पास एक selective advantage है. Lac plus E. coli have lac operon, right? And अगर उनके पास lac operon है, so they can basically form the beta galactosidase enzyme, and they can form the lactose permease enzyme, which allows lactose metabolism to occur. Lactose metabolism होगा तो lactose जो है it would break down into glucose and galactose. Glucose आएगी, glucose would be used as an energy resource. सही बात है? Do you agree with this? Now, हमने relationship understand कर ली. Suggest why the presence of lactose caused lac plus E. coli to have a selective advantage. अगर glucose नहीं है environment में, जब ग्लूकोज एब्सेंट होती है, हम ऊपर पढ़ के आए कि जब ग्लूकोज एब्सेंट होती है तभी लैक्टोज एंटर करती है बैक्टीरियल सेल में. इज दैट करेक्ट? नाउ हमारे पास लैक्टोज इज द ओनली शुगर और इज द ओनली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. ओनली लैक्टोज इज प्रेजेंट, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है. इन दैट केस कौन सा वाला बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है? लैक प्लस ई. coli सर्वाइव कर सकता है, लैक माइनस ई. coli सर्वाइव कर सकता है. लैक प्लस सर्वाइव कर सकता है, which gives lac plus E. coli a selective advantage over lac minus E. coli. Is that correct? This would survive, this would not survive. That is selective advantage. And lactose over here is the determining or the selection pressure. Makes sense to everyone? Everybody is now clear on this?
Question number 4 states the evolution of antibiotic resistance in bacteria has occurred as a result of natural selection. Name two ways in which a bacterium can become resistant to an antibiotic. Now, एक तो रीजन बहुत इजी है हम बहुत इजीली ये कहते हैं आंसर कर सकते हैं which is mutation. The second reason is also very easy, but there is a little technicality which we have to understand. हमारे पास mutations है एक resistant gene introduce हो जाती है. Now, when the resistant gene has been introduced in the bacterium population, in the bacteria's population, how does it transfer? There are two ways of the resistant gene to transfer. One way is vertical transmission, binary fission. Another way is horizontal transmission. Now, one of the ways is correct. Read the question and tell me, एक way हमारे पास mutation हो गया, bacterium becoming resistant to an antibiotic. Between horizontal transmission and vertical transmission, which of the two transmission methodologies do you think would be a correct answer to this particular question? And give me your reasoning. Why do you think that mode of transmission is the correct answer? I'll give you guys a very small hint. That's the hint which will help you understand. Tell me, what's the meaning of become? It's more of an English question than a biology question, but that's how CI tests you. What's the difference between horizontal and vertical transmission? Horizontal transmission is when a parent bacterial cell splits into two genetically identical daughter cells. That's no, that's wait, that's vertical transmission. Vertical transmission is binary fission. And horizontal transmission is when one species of bacteria transfers its gene into another bacteria from the same species or from a different species through transduction, conjugation, and transformation. So, horizontal includes the three methods which I listed. Vertical is binary fission. Okay. So Khatija is saying binary, Maishba is saying binary, Christian is saying vertical, which is binary. Okay. Now, become का जो मतलब मैंने पूछा था, become का मतलब होता है to grow into a new state. If I ask you, what do you want to become? आप अभी वो हो नहीं, आप वो बनोगे. Is that what it means? Like if I ask you, what do you want to become after your A levels, or what do you want to become as? Do you want to become a doctor, an engineer, a teacher, whatever, right? So become का मतलब ये होता है कोई चीज initially वो नहीं है, but it's moving into the new state, becoming into a new state. That's what become means. आप हो नहीं, लेकिन आप बनोगे. वर्टिकल ट्रांसमिशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में जो फर्क होता है वो यही होता है. हमारे पास वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू अगर जीन पास डाउन हो रही है, सो दैट बैक्टीरिया इज नॉट बिकमिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है. However, one bacteria is not a resistant bacteria. It has no antibiotic resistant gene. The question is asking you name two ways in which a bacterium can become resistant to an antibiotic. Can become का मतलब ये है कि resistant अभी वो है नहीं, लेकिन इन दो तरीकों से वो future में resistant बन सकता है. Are you guys getting this distinction? क्योंकि अगर कोई चीज वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी बाइनरी फिशन से क्या कहती हैं ट्रांसमिट हो रही है, the bacteria which is acquiring the gene, the antibiotic resistant gene, that is not becoming antibiotic resistant, वो है ही antibiotic resistant. Does that make sense to everyone? So can become का मतलब ये है कि है नहीं वो resistant, लेकिन इस प्रोसेस से वो resistant बन सकता है in future. Make sense? Mutation, and we have horizontal ट्रांसमिशन जिसमें आपके पास कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है. एक बैक्टीरिया की जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया ऑफ द सेम स्पीसी और अ डिफरेंट स्पीसी में पास हो जाए.
This is from AS as well as from selection evolution. Directional selection की examples हमने दो पढ़ी थी. एक हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने सिलेक्शन एवोल्यूशन में. दूसरा डायरेक्शनल सिलेक्शन की एग्जांपल थी हमारे पास इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो हमने मॉथ्स वाला पढ़ा था. Part B, the World Health Organization regularly analyzes bacterial DNA sequence data. Suggest one way in which this contributes to solving the problem of antibiotic resistance in bacteria. If the World Health Organization is regularly analyzing the sequencing, why binary fission can be the answer? Okay, let's say, Hadia, you want to be a doctor. Are you born as a doctor or would you become a doctor? You would become a doctor. So अब by birth कोई चीज नहीं हो, आप eventually वो बन सकती हो किसी process के through. वो हमसे क्या पूछ रहा है? Name two ways in which a bacterium can become resistant to an antibiotic. हमारे पास initially एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है. फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस वो रेजिस्टेंट पैदा नहीं हुआ था, बट वो ऐसे क्या प्रोसेसेस हैं जिनसे वो इवेंचुअली फ्यूचर में कोई चीज वो नहीं था मगर वो बन सकता है. या तो अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो नॉन रेजिस्टेंट से रेजिस्टेंट बन सकता है, या अगर वो किसी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट जीन इनटेक कर ले हुआ या हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन तो वो रेजिस्टेंट बन सकता है. ठीक है. Okay. The World Health Organization regularly analyzes bacterial DNA sequence data, suggest one way in which this contributes to solving the problem of antibiotic resistance in bacteria. Now, let's say in today's day and age, penicillin is not an effective antibiotic. In the last century, penicillin was the gold antibiotic. However, in today's day and age, हम penicillin को use नहीं करते. Why? Because penicillin की efficacy, effectiveness है ही नहीं. Because penicillin से आपके जितने भी bacterial strains हैं वो क्या कहते हैं resistant हो चुके हैं. So analysis of bacterial DNA sequence gives us the data of how the bacteria has mutated, which in turn helps us to develop newer antibiotics. कौन सी antibiotics अब effective नहीं रही हैं और किस बैक्टीरिया के लिए अब हमें नई antibiotics बनाने की जरूरत है. ठीक है. Make sense? So helps us in analyzing the mutation patterns in bacteria, or helps us in understanding the new antibiotics which need to be produced as a result of antibiotic resistance development. For part B, can we say that we can compare the evolution of a resistant bacteria by comparing it with the bacterial DNA sequence from bioinformatics? So essentially, you're talking about tracking the resistance development or formation of resistance genes, right? Yeah, you can totally mention that. Some infectious bacterial diseases are treated with the antibiotic streptomycin. If a person does not finish the prescribed course of streptomycin, bacteria are more likely to become resistant to the antibiotic. Explain why a streptomycin resistant strain of bacteria is more likely to develop as a result of natural selection when a person does not complete the prescribed course of antibiotics. हमारे पास क्या कहते हैं, this is basically an overlap of your understanding of antibiotic resistance from AS as well as your understanding of directional selection that you studied in A2. Now, AS से आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, डॉक्टर्स यूजुअली क्या कहते हैं, या तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं या फिर कॉम, और वो भी अगर देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन में देते हैं टू इंश्योर कि हमारे पास क्या कहते हैं टोटल बैक्टीरियल रेजर्वोयर एलिमिनेट हो जाए, सो दैट अगर कोई बैक्टीरिया किसी एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है तो जो दूसरी एंटीबायोटिक है उससे प्रॉब्ली वो रेजिस्टेंट नहीं होगा, तो दूसरी एंटीबायोटिक उसको इरेडिकेट करता है. So it is very important to complete your prescribed antibiotic course so that आपकी population में जो हम antibiotics use कर रहे हैं उन antibiotics की efficacy कायम रहे. Because if you're not completing the antibiotic course, it is very likely कि हमारे पास जो antibiotic resistance है वो ज़्यादा फैलेगी. So they're asking us that why there is a greater likelihood of streptomycin resistant strain of bacteria to develop as a result of natural selection. We know कि हमारे पास जो increase in antibiotic resistance है वो कौन सी type of natural selection से होता है? Directional से होता है, stabilizing से होता है या disruptive से होता है? Directional से होता है. Very good. Now explain with respect to your understanding of natural selection
वाई इज इट कि हमारे पास जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, और हमारे पास क्या कहती हैं जो नॉन रेजिस्टेंट है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगी. The resistant bacterium survives, and as the antibiotic is not present to eradicate it, the bacterium then reproduces via binary fission to produce more resistant bacteria, leading to a directional selection and a change in the allele frequency occurs. Fine, perfect, Meshba. When a person does not complete the dose of antibiotics, not all the bacteria are destroyed, so those bacteria which stay behind. अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन है. जब हमने डार्विन वैलिस थ्योरी पढ़ी थी ऑफ सिलेक्शन एवोल्यूशन, उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या थी डार्विन की, कि हमारे पास क्या कहते हैं 5 ऑब्जर्वेशंस की हमने बात की थी. उन 5 ऑब्जर्वेशन में एक और ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमारे पास वेरिएशन एग्जिस्ट विद इन द पॉपुलेशन, राइट. नेचुरल सिलेक्शन जो है ऑलवेज एक्ट्स ऑन वेरिएशन, क्योंकि अगर सभी एक जैसे होंगे तो हमारे पास एक फिनोटाइप कैसे सेलेक्ट होगा और दूसरा कैसे डिसएडवांटेज पे होगा और सेलेक्ट नहीं होगा. सो नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन वेरिएशन. वेरिएशन पहले से ही एग्जिस्ट करती है पॉपुलेशन में. उस पॉपुलेशन की एग्जिस्टिंग वेरिएशन पर हमारे पास क्या कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है. बिकॉज वेरिएशन होगी तभी हमारे पास एक सेलेक्टिव एडवांटेज वाला फिनोटाइप होगा या एडवांटेजियस एलील्स होगी, और हमारे पास डिसएडवांटेजियस एलील्स होंगी. ठीक है. सो हमारे पास क्या कहते हैं जो सिलेक्शन प्रेशर है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रेशर इज द एंटीबायोटिक जिसका नाम हमें दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ सिलेक्शन प्रेशर. ठीक है. हमारे पास when a person is not completing the course of antibiotic, हमारे पास क्या कहते हैं all the bacteria is not eradicated, and हमारे पास क्या कहते हैं जो resistant bacteria होगा वो पीछे रह जाएगा. The resistant bacteria is surviving. Non-resistant bacteria, because of a disadvantage, gets eradicated, gets destroyed. हमारे पास पीछे क्या रह गया, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रह गया. अब जो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसके पास कंपटीशन ज्यादा नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉन रेजिस्टेंस वाले तो सब हमने फिनिश कर दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन की यूज की वजह से. सो नाउ दोज resistant bacteria would increase in number via binary fission and pass down their resistant alleles to their offsprings, due to which हमारे पास overall रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, which is an example of what directional selection. Makes sense to everyone? Anybody who's confused? Okay, pretty straightforward. So streptomycin is the selection pressure. Not completing the prescribed course means that the bacterial reservoir is not completely eradicated, and the resistant bacteria survives. They pass down the resistant allele to their offsprings, resulting in directional selection as the number of resistant bacteria increases. Yes, it is important to mention the type of selection. But then again, if you have mentioned the remaining marking points and if you've not mentioned the type of directional selection, sorry, the type of natural selection, then you'll still get your marks. But अगर ये 4 marker या 5 marker होता तो obviously आपको mention करना ज़्यादा ज़रूरी होता. So
Most of the times अगर 2 markers या 3 markers वाले questions होते हैं, so there is a more range of scoring, more leverage of scoring full marks compared to a 4 marker or a 5 marker. Acha ji. Now this is a question which requires brain powers, so I'll go slow with this. And if at any point you want me to repeat something or you don't understand something about the scenario, stop me and ask. Acha ji. Metachromatic leukodystrophy (MLD) is a genetic disease that affects the nervous system. MLD is caused by mutations in the ARSA gene located on chromosome 22. The ARSA gene, which is 3,150 base pairs in length, includes 8 exons and is shown in figure 5.1. So this entire gene has a total of 3,150 base pairs. So 3,150 nucleotides on one DNA strand, 3,150 nucleotides on another DNA strand. Okay. Total, ये जो 3,150 base pairs हैं, they are collectively making up 8 exons और बीच में हमारे पास obviously introns वाला region होगा. जो हमारे पास आपको grey part नजर आ रहा है figure में, the grey part is representing an exon. A genetic test using DNA sequencing is available to identify mutations associated with MLD in the ARSA gene. The sequencing method can only work if a DNA fragment size is less than 1,000 base pairs. So, for any identification of a presence of mutation which can lead to a genetic abnormality in a genetic disorder, तो हम sequencing करते हैं. Sequencing में हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो particular जीन है उसका सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डोमिनेंट वाला है, रिसेसिव वाला है, नॉर्मल जीन वाला है, एबनॉर्मल जीन वाला है. सो सीक्वेंसिंग के थ्रू वी फाइंड आउट द बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट और द जीन. एंड उस सीक्वेंस से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास वेदर द पर्सन हैज अ म्यूटेटेड जीन और वेदर दे हैव द नॉन म्यूटेटेड जीन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए sequencing, they have told us that DNA sequencing method can only work if a DNA fragment size is less than 1,000 base pairs. Now, this particular gene, ARSA gene, has a total of 3,150 base pairs, which is obviously greater than 1,000 base pairs. तो obviously हम पूरी gene का एक साथ sequencing नहीं कर सकते, हमें इस 3,150 base pairs को shorter fragments में break करना पड़ेगा. यहाँ तक are you all with me? Any questions? Okay. So the test involves a number of different stages, which they have listed. Genomic DNA is extracted from a blood sample. So हमारे पास हम क्या करते हैं, हम जिस भी इंसान की जेनेटिक टेस्ट करने वाले हैं, हम उससे ब्लड सैंपल लेते हैं. और जो ब्लड सैंपल लेते हैं, ऑब्वियसली ब्लड सैंपल में ब्लड सेल्स होते हैं. ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस को हम के थ्रू हम क्या कहते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. So blood cells are used as the cells through which we extract the DNA sample of the person we're analyzing the DNA of. Polymerase chain reaction (PCR) using 5 pairs of primers selects 5 different DNA fragments of the ARSA gene. Polymerase chain reaction क्या करता है? What's the purpose of PCR? हमने जो PCR पढ़ा था gene tech में, essentially PCR क्या करता है? It amplifies, it makes copies of the gene. यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें हम 5 pairs ऑफ प्राइमर्स यूज कर रहे हैं, 5 pairs ऑफ प्राइमर्स यूज कर रहे हैं और हर पेयर जाकर 5 different डीएनए फ्रेगमेंट से बाइंड करेगा, यानी कि 5 different लोकेशन से जाकर बाइंड करेगा. द पर्पस ऑफ यूजिंग 5 pairs ऑफ प्राइमर्स या 5 different pairs ऑफ प्राइमर्स विच आर एसोसिएटिंग टू 5 different लोकेशंस of this complete gene is to ensure कि हमारे पास जो एम्पलीफिकेशन हो या जो कॉपीज बने वो कॉपी 3,150 बेस पेयर्स की ना हो, बल्कि हमारे पास हम शॉर्टर कॉपीज बनाए. हमारे पास 5 कॉपीज आए इंस्टेड ऑफ, मतलब 5 different टाइप की कॉपीज आए इंस्टेड ऑफ all the copies having 3,150 base pairs. Does that make sense? तो वो हमें जो 5 different fragments बनेंगी उनकी भी हमें डिटेल वो टेबल में नीचे देंगे. Okay, I'll repeat the last point. हमारे पास अगर हमें DNA sequencing करनी है, we want to find out the sequence of the nucleotides of the ARSA gene, we have to ensure that the size of the gene is less than 1,000 base pairs, right? And because the ARSA gene is 3,150 base pairs in length, we need to ensure कि हमारे पास जो copies हों ARSA gene की वो 3,150 base pairs की ना हो, instead हमारे पास उसके छोटे छोटे fragments हो. Is that correct, Hadia?
सो व्हाट वी आर डूइंग इन पीसीआर इज यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे पास हम डीएनए जो सेगमेंट है जिसकी हमें कॉपीज चाहिए होती हैं उसको हम पीसीआर में डालते हैं, और हम क्या कहते हैं जो पूरा डीएनए सेक्शन है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग 5 डिफरेंट प्राइमर्स। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग 5 प्राइमर्स, वो 5 प्राइमर्स जो हैं दे टोल्ड अस दैट दे आर सेलेक्टिंग 5 डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ द एआरएसए जीन। यानी कि हर पेयर ऑफ जो जो हमारे पास 5 पेयर्स ऑफ प्राइमर्स हैं, each pair is going to 5 different locations. Does that make sense so far? यानी कि लेट्स से हमारे पास एक ये सेक्शन कर लेता है, एक ये सेक्शन कर लेता है, एक ये कर लेता है, एक ये कर लेता है और एक ये कर लेता है। सो हमारे पास हर पेयर ऑफ प्राइमर उतनी सेक्शंस की ही कॉपीज बनाएगा। Does that now make sense to everyone? इससे क्या होगा, हमारे पास छोटी छोटी कॉपीज आ जाएंगी बहुत सारी पूरी जीन की, which also would solve the problem of having a gene or a DNA section as long as 3150 base pairs. ठीक है? Now, gel electrophoresis is carried out on the DNA fragments. हमने जो different fragments ली PCR के थ्रू, उन fragments को हम फिर gel electrophoresis उन पे carry out कर रहे हैं. The DNA fragments are then sequenced and analyzed for mutation. So पहले हमने DNA extract किया, that was our first step. DNA extract करने के बाद हमने उनकी जब PCR करवाई, उनकी multiple copies बनवाई, तो हमने ensure किया कि हमारे पास जो gene है वो पूरी उसकी कॉपीज ना बने, इंस्टेड उसको फ्रेगमेंट्स में उसकी बहुत सारी कॉपीज आ जाए। पीसीआर से जब हमने बहुत सारी फ्रेगमेंट्स की कॉपीज ले ली तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद फाइनली आवर लास्ट स्टेज वाज डीएनए सीक्वेंसिंग, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ईच ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्लियर इन चारों स्टेजेस? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू रिपीट? Table 5.1 shows the length of the DNA fragments and the exons present in each DNA fragment. तो हमने जो 5 different fragments produce किए during PCR, so we're seeing कि हमारे पास each fragment जो बनी उसकी length क्या है, उसमें कितने base pairs हैं, और हमारे पास each fragment में कौन कौन से exons present हैं. So the fragment 1 is 405 base pairs long. It's very significantly lesser than 1000 base pairs, so इसकी sequencing बिल्कुल हो सकती है। और फ्रेगमेंट 1 में खाली एक्सॉन 1 शामिल है। फिर फ्रेगमेंट 2 इज 737 बेस पेयर्स लॉन्ग, दिस इज आल्सो लेस देन 1000 बेस पेयर्स, इसकी भी सीक्वेंसिंग हो सकती है। एंड क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट 2 में सम पार्ट ऑफ एक्सॉन 1 एंड सम पार्ट ऑफ एक्सॉन 2 इज प्रेजेंट। Fragment 3 is 706 base pairs long, that is also less than 1000 base pairs, इसकी भी sequencing हो सकती है। और fragment 3 में some part of exon 2, complete exon 3 and complete exon 4 is present. Fragment 4 हमारे पास 860 base pairs long है। Again, this is also less than 1000 base pairs, इसकी भी sequencing हो सकती है। और fragment 4 में we have exon 5, exon 6 and some part of exon 7. Fragment number 5 में हमारे पास 916 base pairs है। Again, this is also less than 1000 base pairs, इसकी भी sequencing हो सकती है। And fragment 5 consists some part of exon 7 and complete exon 8. ठीक है? टेबल समझ आ गया? Now, the first part states genomic DNA and primers are added to the PCR machine. Name 2 other substances that are added to the PCR machine and explain why each substance is added. So, हमें primers add करने होते हैं to initiate elongation. फिर हमारे पास क्या कहती हैं, वी हैव द डीएनए, द सैंपल डीएनए। इसके अलावा हमें टैग पॉलीमरेज चाहिए होती है, व्हिच इज द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द इलोंगेशन पार्ट, जिसको हम क्या कहती हैं, we basically form a complementary DNA strand। और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, जिनको हम डीएनटीपीज बुलाते हैं इन A2, वो होने चाहिए। सो वी शुड हैव डीएनटीपीज। The purpose of DNTPs is to ensure to form the complementary DNA strand by forming hydrogen bonds with the complementary bases of the genomic DNA
strand. Then we need Taq polymerase enzyme, which forms phosphodiester bonds between DNTPs to form the double stranded DNA. यस, हमारे पास क्या कहते हैं, जीनोमिक जो स्ट्रैंड होता है, इट इज लाइक अ सिंगल स्ट्रैंड जो हम इनपुट करते हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं, हम एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जिनको हम DNTPs बुलाते हैं, बिकॉज एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स एसेंशियली हैव 3 फॉस्फेट्स. एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के पास सिंगल फॉस्फेट होता है. DNTPs आर बेसिकली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, DNTPs बेसिकली first form hydrogen bonds with the complementary bases on the genomic strand. And obviously हमारे पास एक strand है, हमें क्या कहते हैं उसका complementary strand बनाना है. जब वो complementary strand बन जाएगा तो हमारे पास essentially double stranded DNA molecule एक नया बन जाएगा, which is exactly same to the what do you say, the sample that we added. Primers are basically a very short sequence of DNA nucleotides. They're like 15 to 20 nucleotides only. Obviously, हमारे पास जो gene है, that is longer than 15 to 20 nucleotides. Primers खाली initiate करवाते हैं. We also need more activated nucleotides so that those activated nucleotides can join and further propagate elongation. सो प्राइमर से बहुत थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. वी नीड मोर देन दोज, और वो मोर देन दोज के लिए हमें ऑब्वियसली DNTPs ऐड करने पड़ता है. डज दैट मेक सेंस ऑन यू? प्राइमर्स हमारे पास बेसिकली उनकी जो शेप होती है, दैट इज इन अ वे व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टैग पॉलीमरेज. सो द टैग पॉलीमरेज की जो एक्टिव साइट है, इट नोज वेयर टू अटैच. So the primers are basically a short sequence of DNA nucleotides which have a complementary shape to the active site of your tag polymerase so that the tag polymerase knows where to bind and start elongation from. The DNTPs are like free activated nucleotides which would essentially come and start to form hydrogen bonds with the complementary pair of DNA. एंड हमारे पास दे आर हेल्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन नहीं बनी हुई. द टैग पॉलीमरेज वुड मूव through those DNTPs which are associated via hydrogen bonds with complementary base pairs to complete the sugar phosphate backbone by forming phosphodiester bonds. Yes, the purpose of primers is to basically guide our tag polymerase. Now, the next part says gel electrophoresis is carried out on the 5 different DNA fragments produced as a result of PCR. Each DNA fragment is put into a loading well on the gel. The final lane on the electrophoresis gel contains a DNA ladder of known lengths of DNA. Figure 5.2 shows the result of the gel electrophoresis, suggests the role of the DNA ladder. Now, the DNA ladder basically consists of the bands of already known DNA strands. So, हमारे पास इससे होता क्या है कि हम अपनी हर फ्रेगमेंट का जो साइज है, वो साइज हम कंपेयर कर सकती हैं with the matching level of the already known length of DNA on the DNA ladder. So it offers us the estimate size of the fragment. Does that make sense? Yeah, it's like a measuring scale or a tape. हमारे पास यहाँ पे हमें पता होगा कि ये जो लेंस है वो क्या है, इस DNA की क्या लेंथ है ये नोन है, इसकी क्या लेंथ है ये नोन है. सो हमारे पास जो भी हमारी फ्रेगमेंट है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द DNA लेटर टू फाइंड आउट एन एस्टिमेट साइज ऑफ आवर फ्रेगमेंट. सो या तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही थिकनेस या सेम ही लेंथ आ रही है, सो वी कैन से दैट ओके दिस फ्रेगमेंट 5 is same as the fragment, the known fragment on the DNA ladder. तो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है DNA ladder, या फिर हमें हेल्प करता है हमारी फ्रेगमेंट का जो लेंथ है साइज और उसको एस्टिमेट करने में. Yeah, you can say it acts as a baseline for comparison, or you can, instead of baseline,
You can use the word standard. It acts as a standard of comparison. That would be a better answer. Standard of comparison कह सकते हैं. DNA letter is a standard of comparison to compare our fragments with known lengths of DNA to either identify our fragment or to estimate the length of the fragment. ठीक है? Makes sense to everyone? Okay. In the genetic test for MLD, PCR and gene electrophoresis are carried out before DNA sequencing. Suggest and explain reasons why PCR and gel electrophoresis are carried out before DNA sequencing. Okay, हमारे पास before DNA sequencing हमने ensure करना था कि हमारी जो 3150 base pairs long gene है, that gene is basically broken down into shorter fragments. So हमने PCR के थ्रू क्या कहते हैं जब copies बनाई अपनी gene की, so we made sure that the copies are are basically containing fragments of the gene and not the entire gene, so that the sequencing of the gene is possible. The purpose of PCR समझ आ गया? Can I then move towards the purpose of gel electrophoresis? जो separation हमारे पास हानिया PCR में हुई थी, that separation was not because of charge and size, or you can say the mass. That separation was because कि हमने different locations पर 5 different locations पर primers add किए थे. जहां जहां प्राइमर ऐड हुआ था वहां वहां हमारे पास स्टैक पॉलीमरेज गई और वहां वहां उसने क्या कहती हैं अपनी इलोंगेशन कर दी, एनीलिंग कर दी एंड इवेंचुअली हमारे पास फ्रेगमेंट्स की फिर कॉपीज आई. फिर जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ उसमें यस जो सेपरेशन हुई दैट हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज. जब हम डीएनए के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो वहां पर जो डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है दैट इज द साइज और यू कैन सी द लेंथ ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट. Does that answer your question, Anya? Okay. So the purpose of PCR to be carried out before DNA sequencing was to make copies of the DNA, but in a way that the copies do not contain the complete 3150 base pairs. Instead, the the 5 different pairs of primers ensure that the copies are made of fragments which are smaller than 1000 base pairs. Make sense? Anas, you asked me to repeat that part. फिर जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमने क्या कहते हैं अभी डीएनए लेडर की बात के ऊपर, that the DNA ladder acts as a reference point or a standard of comparison to allow us to identify the DNA fragment or estimate the length of the DNA fragment. हमारे पास हमने fragmentation करवा ली during PCR, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि हमारे पास let's say कोई fragment 1100 base pairs का बनता. अगर 1100 बेस पेयर्स का कोई फ्रेगमेंट बनता और हम पीसीआर से डायरेक्टली जो हमने फ्रेगमेंट्स की कॉपीज प्रोड्यूस करवाई थी वो सीक्वेंसिंग करवाते और कोई फ्रेगमेंट 1100 बेस पेयर्स का होता है तो उसकी सीक्वेंसिंग नहीं होती, हमारा पूरा जो टेस्ट होता है वो बेकार चला जाता. ऑब्वियसली जेनेटिक टेस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव, तो उनकी वन टाइम पेमेंट ही बहुत एक्सपेंसिव होती है, सो बार बार उनको रिपीट करवाया नहीं जा सकता. नाउ हमारे पास ये कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज लाइक अ प्रोपोर्शनरी मेजर और मोर ऑफ अ accuracy measure in which we're confirming कि हमने जो fragmentation करवाई during PCR, जो fragments बनी, are those fragments all less than 1000 base pairs long, or is there any fragment which is longer than that? Make sense? So जब separation हुई DNA fragments की during gel electrophoresis on the basis of their length or their size, it helped us confirm that the fragments which were produced during PCR were all less than 1000 base pairs. So that DNA sequencing could be carried out on each of the fragments. Make sense? DNA sequencing is basically a methodology through which we can find out the exact sequence of nucleotides in a DNA section. Does that answer your question, Adia? Calculate the number of copies of DNA that are obtained if PCR is run for 35 cycles. Assume that there is only one copy of DNA at the start of PCR. Give your answer in standard form to two significant figures. हमारे पास एक formula होता है 2 raised to the power n, where n is your number of cycles. Over here, 35 is the number of cycles, so 35 is our n. So this becomes
2 raised to the power 35. What are you guys getting as your answer? And remember, the answer has to be in two significant figures. Your answer should be 3.43 into 10 to the power 10, and then that has to be rounded off. 2 raised to the power 35. Good. And guys, do it again. For those of you who are not getting 3.435 into 10 to the power 10. Yeah, it's 35. मेरा 35 क्या इतना बुरा है कि वो 35 डिसाइफरेबल भी नहीं है. So this would be 3.435 into 10 to the power 10. इसको हमने कितनी significant figures पे देना है? We have to give it to two significant figures, which means this would become 3.44 into 10 to the power 10. ठीक है? Everybody is getting this as their answer after you correctly use the values in the calculator. Okay. Oh, yes. Thank you so much for the correction, Daniel. It's 3.4 into 10 to the power 10. I am so used to of writing in three significant figures. Thank you so much, Daniel. Okay. MLD is a rare autosomal recessive disease. Okay, so they've told us that it is a rare autosomal recessive disease. It is estimated that there is one case of MLD in 40,000 births worldwide. Children with MLD have a reduced life expectancy. So, one out of 40,000 people have MLD. MLD is a degenerative disease that causes severe disability. Degenerative disease का मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी सेल्स हैं एंड इन दिस केस क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो वक्त के साथ साथ डिजेनरेट हो रहे हैं. ठीक है? कैन आई गो अप टू दिस पार्ट और द पार्ट अबव दिस alpha? Okay. MLD is a degenerative disease that causes severe disability. Before 2022, there was no known cure for MLD, and the only treatment for symptoms was to provide pain relief. A new gene therapy treatment, known as LibMelD, became available in a number of countries in 2022. The treatment must start before symptoms are present. Although the treatment may provide a cure for MLD, a single dose is extremely expensive. Blood samples from newborn babies are screened for a number of rare genetic diseases, neonatal screening. So at the time of the birth, a child is known as a neonate. So उसकी जो screening होती है उसको हम neonatal screening बुलाते हैं. In most countries of the world, but none include screening for MLD. So because the gene therapy of MLD is a very new discovery in research, so अभी तक क्या कहती हैं MLD की स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही थी क्योंकि MLD का क्योर ही मौजूद नहीं था. लेकिन एवर सिंस हमारे पास क्या कहती हैं क्योर आ गया है, सो आहिस्ते आहिस्ते कुछ कंट्रीज जो हैं दे आर इंक्लूडिंग द स्क्रीनिंग ऑफ MLD in the neonatal screening program. Discuss the social and ethical considerations of including screening for MLD when carrying out neonatal screening in a country where gene therapy for MLD is available. So हमें क्या कहते हैं, अच्छा जब भी हम सोशल एथिकल कंसिडरेशंस की बात करते हैं वी ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट द प्रोज एंड द कॉन्स क्योंकि हर चीज की कुछ अच्छाइयां भी होंगी, हर चीज की कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे. सो हमारे पास एक ऐसी डिजीज जिसकी पहले क्योर मौजूद नहीं थी, क्या उसको क्या कहते हैं उसकी स्क्रीनिंग इंट्रोड्यूस करना एवर सिंस द क्योर हैज बीन अवेलेबल, इज दैट अ गुड थिंग सोशली एंड एथिकली और इज दैट अ बैड थिंग? इट्स अ गुड थिंग बिकॉज अगर हमें क्या कहती हैं ये पता चल जाएगा कि किसी को म्यूटेटेड रिसेसिव डिजीज सॉरी म्यूटेटेड रिसेसिव जीन मौजूद है उसकी क्या कहते हैं जीनोम में. सो because they've told us that this disease, wait, why has my screen disappeared? Yeah, we'll be talking about both good and bad things, guys. अभी हम good की बात करते हैं फिर हम bad की तरफ जाएंगे. Okay, so we were talking about the social and ethical considerations. हमारे पास ये कहती हैं, इधर mentioned है clearly that the gene therapy, the treatment must start before the symptoms are present. So symptoms अगर present हो जाएंगे और उसके बाद हम therapy start करेंगे तो फायदा ही नहीं है इस therapy का. So हमारे पास क्या कहती हैं, one good thing that this genetic screening would bring
to the person who might have MLD is that early detection would ensure that the treatment starts early and the child does not develop the symptoms. फिर हमारे पास obviously अगर हम थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, so they are telling us that सिवियर डिसेबिलिटी होती है एमएलडी की वजह से, और जो सिवियर डिसेबिलिटी होती है वो पेनफुल भी होती है, क्योंकि बिफोर दिस थेरेपी वाज अवेलेबल हमारे पास क्या कहते हैं, हम खाली पेन रिलीफ मेडिकेशंस दे रहे थे. So if a person is detected early and the treatment starts early, it would ensure that the quality of life or the pain that the child might experience because of the development of MLD, that is relieved at an earlier stage. तो हमारे पास overall पेन की जो डिग्री है वो लेस हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी. ठीक है. फिर हमारे पास क्या कहती हैं नेगेटिव ड्रॉबैक्स क्या होता है. हम जीन थेरेपी के बारे में हमेशा कहते हैं जीन थेरेपी इज वेरी एक्सपेंसिव. A normal person cannot afford until and unless कोई बिलियनियर उसको फंड ना कर दे, या फिर कोई बिलियनियर के घर में ऐसी बीमारी की डिटेक्शन होगी वो ही अफोर्ड कर सकते हैं जीन थेरेपी, बिकॉज इट्स लाइक इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स विच इज आउट ऑफ रीच फॉर अ लॉट ऑफ normal population or the average population of any country. So even if it is detected, gene therapy is very expensive. So socially and ethically, it is not something which is accessible to the entire population of any country. फिर हमारे पास क्या कहते हैं इवन द फैक्ट कि हम यूनिटल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, स्क्रीनिंग कोई मुफ्त में नहीं करता. स्क्रीनिंग के या कोई भी टेस्ट आप हॉस्पिटल में करवाते हो उसके पैसे होते हैं. जेनेटिक स्क्रीनिंग इज एक्चुअली अ वेरी expensive process. So socially not everybody can afford genetic screening. So ये इसके drawbacks हैं. Any confusions, any questions? अच्छा, ऑल्सो जब भी कोई भी नई मेडिकल रिसर्च आती है, जब तक ये फर्स्ट 10 years या 20 years तक ये नोटिस ना किया जाए कि ओके इस चीज के, इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इट इज रिस्की टू एक्चुअली यूज दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन उस ट्रीटमेंट से क्या कहते हैं एक्सपोज नहीं हुई है, उस ट्रीटमेंट को यूज नहीं किया गया है कि हमारे पास स्टेटिस्टिकल डेटा हो दैट वेदर और नॉट दिस ट्रीटमेंट इज एक्चुअली वर्किंग or it's not working. So because 2022 was what? It was 3-4 years ago. हमारे पास इतनी ज्यादा statistical data available नहीं होगा about the success of this gene therapy. So at the given moment, at this given time actually, ये screening करवाना और ये therapy लेना ethically कुछ लोगों के लिए difficult decision होगा, because there is no enough data or there is no enough statistical evidence to back the success of this therapy. Make sense? Okay, let's move to the next question. So question number 6, part A states, phosphoinositide 3 kinase PI3K and protein kinase B PKB are enzymes involved in the regulation of blood glucose concentration. Figure 6.1 shows a cell signaling pathway involving insulin, PI3K and PKB in a muscle cell. So we have a receptor. This receptor is the receptor for the insulin hormone. The insulin comes and binds with the receptor. जैसे ही हमारे पास insulin bind करती है, it triggers a series of reactions within the cell in which we have the activation of PI3K, which in turn activates PKB. PKB is your it's your protein kinase B. The activation of protein kinase B eventually activates the vesicle which contains GLUT for transport protein. GLUT is basically the protein transport protein which allows the entry of glucose. And once this vesicle is activated, it binds with the cell surface membrane and allows regulation of glucose हो जाती है. हमारे पास GLUTs के जो numbers हैं वो increase हो जाते हैं cell surface membrane में, और glucose जो है वो ब्लड से हमारे पास सेल के अंदर आना शुरू हो जाती है. इज द पाथवे क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स अबाउट द फिगर? Okay. Type 2 diabetes mellitus is a common disease. Some people with type 2 diabetes have a low concentration of PI3K in their muscle cells and cannot maintain their blood glucose concentration within normal limits. डायबिटीज में हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हाई ग्लूकोज होती है, हाई ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होती है, या हाइपोग्लाइसीमिया होता है. हमारे पास इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होता है क्योंकि जो ग्लूकोज है इट स्टेज विद इन द ब्लड. नो, हाइपर इज करेक्ट आ दिया. हाइपो में वो जा सकते हैं अगर वो क्या कहते हैं प्रोन टू गो इनटू हाइपो कंडीशन, बट डायबिटीज इजेंशियली
और डायग्नोज ही तब होता है जब आपकी ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो, ठीक है। नॉर्मल रेंज से ज्यादा अगर ब्लड प्लाज्मा में शुगर हो तभी हम उसको शुगर की बीमारी कहते हैं, क्योंकि ब्लड में शुगर ज्यादा होती है, वो अपटेक नहीं कर रहे होते आपके मसल सेल्स। ओके। अच्छा, महेशबा, वी कैन नॉट कॉल इट a secondary messenger over here because हमारे पास क्या कहते हैं, if you have seen in notes, I don't know if मैंने include किया है साल के notes में कि नहीं, but I think so there it is present कि हमारे पास series of enzymes are phosphorylated which eventually phosphorylases glycogen phosphorylase। वो मैंने क्या कहते हैं, शायद ग्लूकागॉन में एक्सप्लेन किया था, इंसुलिन के रिस्पेक्ट से एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैंने ग्लूकागॉन के एस्पेक्ट से एक्सप्लेन किया हुआ है दैट जब भी हमारे पास ग्लूकागॉन आता है, इट बेसिकली सीएमपी बनता है, साइक्लिक एएमपी बनता है, और हमारे पास बहुत सारी एंजाइम्स ट्रिगर हो जाती हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या कहते हैं, एंजाइम्स का ट्रिगर होना या एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन, दैट इज नॉट सेकेंडरी मैसेंजर का काम। वो तो हमारे पास एक के बाद दूसरा वो पूरा एंजाइम कैस्केड है, सो ये बेसिकली हमें अ सर्टेन पार्ट ऑफ एंजाइम कैस्केड शो किया हुआ है। या द वंस ऑन आई थिंक सो, मैंने शायद बायोडाइवर्सिटी की अपडेट किया, खाली बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आए हैं और मुझे बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा और एडिट करना है। I'll edit it once I'm done checking your mocks. I'll be checking your mocks P5 this weekend, so सबको hopefully Sunday तक आप लोगों के P5 return मिल जाएंगे, and then next week onwards I'll start checking paper 4. If there is a low concentration of PI3K, there will be a high blood glucose concentration. That's correct, right, Christian? Sorry. Sure. What's the difference between hypo and hyperglycemia? Hypoglycemia means low blood glucose concentration. Hyperglycemia means high blood glucose concentration. Okay. So with reference to figure 6.1, suggest why a low concentration of PI3K can lead to type 2 diabetes. So if we have a low concentration of PIK3, low concentration of PIK3 means that um, the enzyme protein kinase B, or you can simply write PKB, would not be activated. If the enzyme PKB is not being activated, less activation of PKB. If there is less activation of PKB, that means that lesser vesicles containing GLUT4 transport protein would fuse with the cell surface membrane. Less vesicles containing GLUT4 transport protein would fuse with cell surface membrane, which means less glucose would be taken in by muscle cells, due to which the person's blood glucose concentration would be high, leading to type 2 diabetes. Okay, describe how a biosensor can be used to measure blood glucose concentration. It is a pure recall question, no rocket science needed. आपको याद होगा तो आप ये 7 marks easily secure कर सकते हो, नहीं याद होगा तो 7 marks नहीं आएंगे. So what happens is that we add a blood sample. सबने कभी ना कभी किसी ना किसी को ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट करते हुए देखा होगा. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, that we take a blood sample and that blood sample is added to the biosensor. So blood sample is added to the biosensor. Now when the blood is added to the biosensor, हमारे पास एक enzyme होती है in the biosensor. What is the name of the enzyme which is present in the immobilized form within the biosensor?
Glucose oxidase. Very good. Immobilized glucose oxidase is present within the biosensor, which reacts with the blood glucose to form what is produced as a result. What are the two products of this reaction? Sorry, which does not react. वो react नहीं करती, oxygen react करती है. Wait, let me correct this. Which catalyzes the reaction glucose to gluconic acid and hydrogen peroxide. If you want to write the equation of equation, we लिख सकते हो that the glucose reacts with oxygen. Make an arrow, write glucose oxidase to show that this reaction occurs in the presence of glucose oxidase and show the products which are gluconic acid and hydrogen peroxide. Word equation होगी तो word equation में आप H2O2 नहीं लिखोगे, आप hydrogen peroxide ही लिखोगे. Now, the change in the concentration of glucose and or gluconic acid and hydrogen peroxide is transduced into an electrical signal. This becomes your third marking point. This electrical signal is amplified by electrodes causing a reading to appear on the screen. Now, हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारा size of the electrical signal होता है, that size of the electrical signal is directly proportional to the concentration of glucose. ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है ग्लूकोज बायोसेंसर के क्वेश्चन में कि जो हमारे पास करंट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन रहा है, that is basically a representation or that is basically proportional to the amount of glucose present within the blood. So the size of the electrical signal is proportional to the glucose concentration in blood. Yeah, even the drop in oxygen is something which can be detected. Basically, आपके पास या तो substrate concentration में जो change आ रहा है, या जो आपके पास product की concentration में change आ रहा है, that change of chemicals within the machine is basically detected. वो जो chemical signal है, that chemical signal is transduced into an electrical signal. Does that answer your question? H plus are released by gluconic acid that produce electric charge. अच्छा, हमारे syllabus में आनिया ये की कहते हैं जो पूरी electrical conversion है, that is not part of our syllabus. So although your answer is correct, हमारे syllabus में ये detail मौजूद है नहीं वैसे. So ये MS में marking point होगा नहीं. But again, that taps on the fact कि आप transduction की बात कर रहे हो, तो हमारे पास क्या कहते हैं, वो accurate समझा जाएगा.
Clear? एडवांटेज कौन से एडवांटेज आप लिखना चाहते हो खतीजा? एडवांटेज के यूजुअली मार्क्स होते तो नहीं है। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, रीडिंग का बेनिफिट अगर आप कह रहे हो खतीजा, तो रीडिंग का बेनिफिट ये आप कह सकते हो कि रीडिंग का बेनिफिट उसको आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप रोबोसिटी की बात करना चाह रहे हो कि हमारे पास वो रोबस्ट होता है या नहीं होता, तो वो फिर एक डिफरेंट बात है। बट इफ यू आर ट्राइंग टू से कि हमारे पास जो एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स, बिकॉज हमारे पास साइज ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, देन दैट इज अ करेक्ट मार्किंग पॉइंट। लेकिन एनी अदर एडवांटेज यू कांट राइट, क्योंकि हम जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल या रीडिंग की बात करते हैं, तो वो इसी से इंटर रिलेट होता है पॉइंट। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? लेट मी सी क्वेश्चन 7 कितना लंबा है। क्वेश्चन 7 इज नॉट दैट लॉन्ग, हम कर सकते हैं। Okay. The Venus flytrap, Dionia muscipula, is a plant that can capture insects. Each leaf of a Venus flytrap is modified to form two lobes. Figure 7.1 shows how the leaf of a Venus flytrap appears folded close when an insect has been captured. Suggests a reason why Venus flytrap needs to capture insects even though it carries out photosynthesis. Very straightforward. हमारे पास क्या कहते हैं, the soil in which it is growing lacks nitrogen, लैक्स नाइट्रोजन, तो हमारे पास जो प्रोटीन कंटेंट विद इन द इंसेक्ट्स होता है वो उनको यूज करता है टू मेक अमीनो एसिड्स। सो द सॉइल इन विच इट ग्रोज लैक्स nitrogen needed for amino acid synthesis. The leaves are specialized to form two lobes. The lobes are red on the upper surface. Suggest why lobes are red. Very straightforward. To attract insects. The loops have sensory hairs. Touching one sensory hair will not cause a response by the leaf. At least two sensory hairs need to be touched within 20 seconds to cause a response in the leaf. State the advantage to the plant of producing a response only when two sensory hairs are touched within seconds. हमारे पास क्या कहते हैं, जो पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, that basically requires ATP, क्योंकि हमारे पास जो changes आ रहे होते हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर करते हैं। सो द रीजन वाई 20 सेकेंड्स का टाइम फ्रेम है वो इंश्योर करता है कि हमारे पास वाकई अगर एक इंसेक्ट मौजूद है सिर्फ तब वो पूरा मैकेनिज्म ट्रिगर हो। ensures ATP is not unnecessarily, बल्कि is not wasted ही सही है। When an insect has been trapped, the leaves have to remain closed for a number of days. Suggest why this needs to happen to digest the insect completely. ये इतना आसान पेपर कैसे इतना आसान क्वेश्चन कैसे बना दिया इन लोगों ने? Okay. Action potentials are produced by the Venus flytrap during the closure of a leaf. Each action potential is also associated with a refractory period. This is similar to the action potential and refractory period observed in a mammalian neuron during nerve impulse transmission. Explain the role played by the refractory period in the transmission of an impulse in a mammalian neuron. हमारे पास क्या कहते हैं, सबसे important reason of having a refractory period is to ensure that the direction of impulses is unidirectional. Very good. हमारे पास क्या कहते हैं, it also determines कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल की जो लिमिट है वो क्या होगी। हमने पूरा क्या कहते हैं पढ़ा था ना कि वी हैव एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड वी हैव अ रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो हमारे पास क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच कोई भी नया स्टिमुलस, चाहे वो सुपरा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का भी क्यों ना हो, कैन नॉट ट्रिगर a new action potential. So हमारे पास basically the time duration of one action potential and the next is determined by the refractory period, which in turn ensures or which in turn determines the maximum amount of frequency
of action potentials which can take place at a in a given neuron. Make sense? So at a given time हमारे पास जो action potentials हैं, जो nerve impulses हैं, वो one after the other move करनी चाहिए. अगर वो हमारे पास overlappingly move करेंगी तो हमारे पास क्या कहते हैं obviously short circuit हो जाएगा brain में, brain काम नहीं करेगा सही से. So we have to ensure that each action potential is unique, it is unidirectional, and the refractory period basically ensures the time limit of one action potential, which in turns determines the frequency of action potential in a given neuron. Make sense? Any questions? Any confusions? ये advantage of the refractory period maybe मैंने clearly mention किया है. We'll quickly go over that and then we'll call the class off. So you see the significance of refractory period is to ensure unidirectional flow of action potential. So the refractory period ensures the unidirectional flow of action potential by temporarily preventing the re-excitation of neuronal regions that have just been previously depolarized, which in turns हमारे पास क्या कहती हैं ensure करता है frequency of the action potential. The refractory period determines the maximum frequency of action potentials by setting a limit on how quickly a neuron can fire another action potential after the previous one. Make sense? Yeah, it is same as what has been uploaded on the drive. I really don't हाँ website पे भी वही uploaded होंगे because मेरी drive ही upload होती है website पर. We're left with 3 questions of this paper. अच्छा जी. So question number 8 states, palm oil is the most widely used vegetable oil. It is obtained from the African oil palm, Elias genesis. Oil palms are the highest yielding vegetable oil crop, needing only 10% of the land area required by other crops to produce the same quantity of oil. On the island of Borneo, tropical rainforests are cut down and cleared to create oil palm plantations. This has a large effect on biodiversity. And the Bornean orangutan, Pongo pygmaeus, is only found on the island of Borneo and is classified as critically endangered on the International Union for Conservation of Nature IUCN Red List of Threatened Species. Figure 8.1 shows Bornean orangutans. Suggest ways in which Bornean orangutan may be conserved. Now, this is a species which is only found on the island of Borneo. So we need to ensure that a lot of space, a lot of rainforests are not cut down for them to be completely wiped out. And if the tropical rainforests are completely cut down to create oil palm plantations, that would mean that there is no natural habitat available for these orangutans. So obviously, strict rules or strict laws should be enforced in order to ensure that only the area which has been cut down, that's the only cleared space available for oil palm plantations, and further deforestation is strictly banned or strictly prohibited. Although palm oil is the most widely used vegetable oil, it is not the only vegetable oil available to the population. So the population should be provided with education, with awareness that they can shift to different alternative oils for their usage. Because if we would clear a large area, the tropical rainforest, to produce oil, what's it called? Palm oil, sorry. To produce palm oil, it would have a very bad effect on the sustenance of Bornean orangutan. So it's important to have strict law enforcement to ban any further deforestation of tropical rainforests. There should be awareness provided to the people for switching to alternative vegetable oils. Furthermore, since these Bornean orangutans are critically endangered, it is important that we try to increase their number of individuals by captive breeding programs. So we use artificial reproductive techniques to increase the number of Bornean orangutans. There should be a specific area reserved, a protected area, or a barrier line beyond which the tropical rainforest should not be cut down, so that there is an area which the government has ensured would always be protected as a habitat for the
orangutans. Does this make sense? Any questions? Pretty easy, pretty straightforward. Also, if there are critically endangered on the IUCN, then we also need to ensure that they are not raided because there are rare species, they are only found in the island of Borneo. So it is important to ensure that they are not removed from their natural habitat via trading. So we need to have that as well. आप एक generic ये भी लिख सकते हो that they should not be hunted because they're already critically endangered. So इनकी hunting या poaching नहीं होनी चाहिए. That should also be a marking point. So strict laws which ensure further cutting of trees is discouraged and a protected area should be reserved for the orangutans raise awareness to reduce the demand of palm oil production active breeding programs to increase the number of orangutans ban trading hunting or illegal hunting which is known as poaching. Okay, so just over here, why we're not talking about national parks, अगर आप reserved area में national park add करना चाहते हो, आप कर लो. But you need to be very specific with the fact that they've told us that they're only found on the island of Borneo. So island of Borneo में आप yes ये कह सकते हो कि आप एक specific area reserve कर दो, इसको आप एक national park बना दो, so that nobody cuts down the trees in that area. So आप जब protected reserves वाली बात करोगे, so आप उसमें national parks की बात करना और mention clearly करना कि वो island of Borneo पर ही होना चाहिए, ठीक है? Mishpa, why we are not talking about alien species over here? The reason is कि हमारे पास यहाँ पर जिस threat की बात कर रहे हैं, that threat is basically deforestation of the rainforest, which is being cut down for creating oil palm plantations. So हमारे पास क्या कहते हैं? Scenario में we cannot talk about एलियन स्पीसीज क्योंकि एलियन स्पीसीज आप या तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हो या बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कंडीशन नेचुरल डिजास्टर कोई आर्टिफिशियल स्पीसी इंट्रोड्यूस हो जाती है यहाँ पर इसके सिनेरियो में आर्टिफिशियल स्पीसी सॉरी एलियन स्पीसी इज नॉट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड वाया नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स अगर ऐसा कुछ हो रहा होता सो वी वुड हैव टॉक्ड अबाउट दैट बट ओवर हियर द थ्रेट दैट द सिनेरियो इज टॉकिंग अबाउट इज द oil palm plantations being the threat to the sustenance of the numbers of Bornean orangutans. Does that make sense? Okay. I hope there is no other question that I missed. Okay. Okay. Biodiversity can be assessed at different levels. Outline the main levels at which biodiversity can be assessed. So there are three levels at which we assess biodiversity. It's the ecosystem diversity, the species diversity, in which we talk about the species evenness and species richness. And then we have genetic diversity, which talks about the variety of alleles in the genes that are present within the species. So we have ecosystem diversity, we have species diversity, which talks about both species richness and species evenness.
And we have genetic diversity. In the previous part, yes, we can talk about reforestation कि हमारे पास जो एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कट डाउन हो गया है वहां पर अगर हम फिर से जो ट्रीज हैं उनको ग्रो करना शुरू करें सो यस दैट कुड आल्सो एड्रेस द इशू ऑफ बर्मियन orangutans being endangered. So आप क्या कहते हैं वो भी मेंशन कर सकते हो. Okay, next part. The biodiversity of a habitat can be measured by calculating Simpson's index of diversity. The formula for Simpson's index of diversity, D, is 1 minus summation small n upon capital N whole square, where small n is the number of individuals of each type present in the sample, whereas capital N is a total sample size. A survey of shrubs and trees in a temperate woodland was carried out. The results are shown in table 8.1. So they've given us capital N, they've given us small n of each type of species. Complete table 8.1. So we have to complete this part and we have to give the answer of summation. So for n upon n whole square, we have to simply whole square the value of 0.451. So tell me, what would be your answer for this particular column? This particular row, sorry. Okay. So this would basically come out to be 0.203401. Now, for this particular table, we have to ensure कि जितनी decimal places हमें examiner ने दी हुई हैं, हम exactly अपने answer उतनी ही decimal places पे लिखें. So this column is 4 decimal places. So हमारे पास हम 4 decimal places पे अपना answer लिखेंगे. Now, for the next part, हम basically इन सारी values को add कर देंगे. When you add these values, आपके पास जो answer आएगा, that would be 0.3072. So इन सबको समेट करके आपके पास exactly यही आंसर आएगा. आपको कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी पड़ेगी. That's the exact answer you will get in your calculator. If you guys want to do it, you can do it as well on your own. Calculate the value for Simpson's index of diversity. So D is simply 1 minus 0.3072, which would be 0.6928. When we are writing this, आप obviously इसको यहाँ पर भी directly इसी आंसर को copy paste कर सकते हो. Okay. Using your value for D, comment on the biodiversity of this temperate woodland. Is the value closer to 1 or is it closer to 0? Okay, it's closer to 1. And if it is closer to 1, हमारे पास biodiversity is particular ecosystem की, is particular temperate woodland की. Would it be good? Would it be high? How would you write it? Okay, so हमारे पास क्या कहते हैं, since the value is closer to 1, we would say that this has a higher overall biodiversity. You can say that हमारे पास species richness and species evenness भी ज़्यादा होगी. So we'll write that down. The value of D 0.6928 is closer to 1, which means the temperate woodland has a high biodiversity, suggesting rich and even. Any questions? Pretty straightforward. This was. Let's move to the next part. Next question. Okay.
Figure 9.1 shows an absorption spectrum for chlorophyll A. So this is the absorption spectrum of chlorophyll A and the corresponding action spectrum for a species of plant. So they've given us the absorption spectrum of chlorophyll A and they've given us the overall action spectrum. Explain what is meant by an absorption spectrum and an action spectrum. Absorption spectrum basically tells us the absorption of different wavelengths by a specific pigment. In this case, हमारे पास क्या कहते हैं Amalia, if this would have been a three marker or four marker, you would have written that obviously, but क्योंकि हमारे पास ये two marker है, we don't have to go in a lot of detail. अगर ये three marker या four marker होता, you would have definitely mentioned that. ठीक है. Okay, explain what is meant by an absorption spectrum and an action spectrum. The absorption spectrum basically tells us the different wavelengths of light absorbed by a particular pigment. In this case, हमारे पास absorption spectrum chlorophyll A का है. So if you want to name chlorophyll A, you can do that. Action spectrum basically tells us the overall rate of photosynthesis at different wavelengths of light. As you're surely not getting a mark if you write that definition or explanation. Absorption spectrum represents the absorption of different wavelengths light by a specific pigment. Action spectrum represents the rate photosynthesis and wavelengths of light. Suggest and explain why the curve shown in figure 9.1 for the absorption spectrum is different from the curve for the action spectrum for wavelength of light between 450 nanometers and 550 nanometers. So हमारे पास chlorophyll A जो है, it is not absorbing light between 450 to 550 nanometers. However, there is still a certain amount of photosynthesis which is taking place at these wavelengths, which suggests that our accessory pigments, which are chlorophyll B and carotenes, they are basically absorbing light between 450 and 550 nanometers, and they're passing on that absorbed wavelength of light to the reaction center, which is then using that absorbed light energy for the photoactivation, or you can say for the light dependent reaction. And hence, there is a certain amount of action spectrum, certain amount of rate of photosynthesis observed in the action spectrum at these wavelengths. So, although chlorophyll A absorbs little to no wavelength, light between 450 to 550 nanometers, the accessory pigments, which are your chlorophyll B and carotenes, absorb light wavelengths, the absorbed light energy is transferred to the reaction center for the light dependent reaction to be carried. Yeah. Now, this is an interesting graph that we have to understand.
Scientists investigated the effect of temperature on the rate of photosynthesis and the rate of respiration of the trailing azalea at a high light intensity. So there is this particular plant known as trailing azalea, and the if obviously temperature affects both photosynthesis as well as respiration. So scientists basically saw at the same time how changing temperature is affecting the rate of photosynthesis and the rate of respiration. And how were they basically investigating this? They were rate of photosynthesis where basically we're using carbon dioxide. So uptake of carbon dioxide ke through, they figured out the rate of photosynthesis, and production of carbon dioxide ke through, they figured out the rate of respiration. This basically process was being carried out at a high light intensity. So at all the given times, light was available to the plant to carry photosynthesis. So light हमारे पास excess में available थी, and हमारे पास we were varying the temperature. With reference to figure 9.2, describe and explain the effect of temperature on the rate of photosynthesis for K procumbens. And this is a 4 mark question. Describe में हम दो क्या कहते हैं जो चीज़ हमें विजिबल है इस ग्राफ में उसकी बात करेंगे. हम क्या कहते हैं एक ओवरऑल ट्रेंड बताएंगे, उस ओवरऑल ट्रेंड में हम डेटा पॉइंट्स को कोट करेंगे. एंड हमारे पास क्या कहते हैं जो भी हम ट्रेंड बता रहे हैं और जो डेटा पॉइंट्स को हम कोट कर रहे हैं उनकी फिर हम एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिकली लिखेंगे. So we are to talk about photosynthesis. Photosynthesis is basically this curve. Okay. So हमारे पास क्या कहते हैं? In this particular curve, what is happening is that initially increasing the temperature causes an increase in the rate of photosynthesis. However, at the optimum temperature, in this case, हमारे पास जो optimum temperature है, वो ये वाला point है. This point is our basically peak activity or peak rate of photosynthesis, which is at 29 degrees Celsius. So my पास 29 degrees Celsius is the optimum temperature. Increasing temperature beyond the optimum temperature is resulting in a decrease in the rate of photosynthesis. हम data points quote कर देते हैं that at 29 degrees Celsius हमारे पास जो rate of photosynthesis था that was 3.5 milligram per gram per hour. And हमारे पास at 40 degrees Celsius because denaturation start हो गई थी तो हमारे पास the rate of photosynthesis has decreased all the way down to 2.65. सो डिस्क्राइब के लिए हम ट्रेंड बता देंगे. इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद डिक्रीज हो रहा है. दो डेटा पॉइंट्स कोड करेंगे. इनिशियल इंक्रीज का रीजन हमारे पास यही होगा दैट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू विच हमारे पास क्या कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बन रहे होंगे. Beyond the optimum temperature, an increase in temperature is causing denaturation, due to which the rate of photosynthesis is decreasing. Make sense? Okay. The very simple but kind of confusing part could be this question. इतना मुश्किल नहीं है. You guys would be solving it for me. You guys will be telling me that how you would work this calculation out. So the rate of photosynthesis in this investigation was obtained by measuring the uptake of carbon dioxide from the atmosphere. जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इन्वायरमेंट से प्लांट कंज्यूम कर रहा था, ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में एक डिक्रीज आ रहा होगा बिकॉज द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूजिंग इनटू द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. However, they only took in account the effect of the carbon dioxide taken from the atmosphere. They did not take into account the use of carbon dioxide produced by respiration. हमारे पास carbon dioxide plant cells during respiration produce कर रहे होते. That carbon dioxide is also used for photosynthesis. तो हमारे पास carbon dioxide जो एक बाय प्रोडक्ट होता है respiration का, अगर डे लाइट है या लाइट अवेलेबल है, प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, so the plant would not just use atmospheric carbon dioxide, it has the capacity, it has the capability of using the carbon dioxide which was produced as a result of respiration. Using figure 9.2, calculate the rate of photosynthesis at 20 degrees Celsius when the carbon dioxide produced by respiration is taken into account. Now, हमारे पास क्या कहते हैं? Rate of photosynthesis जो हमने ग्राफ में देखा है, that rate of photosynthesis is telling us about the uptake of atmospheric carbon dioxide. Now, हमारे पास जो अपनी produced की भी carbon dioxide plant use कर रहा होगा, the carbon dioxide which was produced by respiration,
Would that be added to find out the rate of photosynthesis? Or would that amount of carbon dioxide be subtracted to find out the rate of photosynthesis? How would you give an overall rate of photosynthesis? Okay, subtracted, subtracted, subtracted. Everybody thinks subtracted. Anybody who thinks हम add करेंगे? Okay, कोई बात नहीं समझ आएगा, पहली दफा मैं फिर से समझाऊंगी. हम एक्चुअली ऐड करेंगे. एंड आई नो द वर्डिंग्स आर प्रिटी कंफ्यूजिंग. आई अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिटली हम अपने सिलेबस में नहीं पढ़ता. हमारे पास ये कहते हैं, टेल मी, फोटोसिंथेसिस में अपनी खुद की कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता? कैन द प्लांट यूज इट्स produced carbon dioxide or can it not use its produced carbon dioxide for photosynthesis? It can, right? हमारे पास ये कहते हैं, देखो, हमारे पास क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट अगर रिस्पायर कर रहा है, वो इंटरसेलुलर एयर स्पेस से डिफ्यूज आउट होगी अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही. बिकॉज वेन एवर योर प्लांट सेल्स आर रिस्पायरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस में मौजूद है. वो कार्बन डाइऑक्साइड या तो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे यानी टेक इन कर लेंगे वो, या डिफ्यूजन, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी. अगर आपका प्लांट लाइट से एक्सपोज्ड है और वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड दैट यू योरसेल्फ आर प्रोड्यूसिंग. इसको ऐसे समझो कि एक कंट्री है, उसके पास क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉप है. वो पर्टिकुलर क्रॉप, लेट से उसकी जो डिमांड्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान में व्हीट क्रॉप बहुत बनती है, बट फिर भी हम व्हीट इंपोर्ट करते हैं. सो हमारी जो यूजेज ऑफ व्हीट है, वो यूजेज ऑफ व्हीट खाली वो व्हीट है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे ममालिक से, या वो भी हमारे यूजेज में आएगा जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मुल्क में? बोथ ऑफ देम वुड बी टेकन इनटू अकाउंट एज कंजम्पशन, नॉट जस्ट द इंपोर्टेड वन, राइट? सिमिलरली हमारे पास जो प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद से भी बना रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से भी ले रहा है, एटमोसफेयर से भी ले रहा है. सो ओवरऑल हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उस फोटोसिंथेसिस में अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड खाली नहीं हो रहा, बल्कि अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हो रहा है. डू वी अग्री विद दिस इक्वेशन कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल कंजम्पशन है प्लांट की फॉर फोटोसिंथेसिस, इट हैज टू सोर्सेस, द एटमॉस्फेयर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है? एवरीबॉडी इज क्लियर? एनीबॉडी हु स्टिल कंफ्यूज्ड? ओके. नाउ वी आर सेइंग कि ये जो अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो हम अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, इट ओनली टुक इनटू अकाउंट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर. They're asking us कि आप हमें एक overall complete rate of photosynthesis with respect to the overall complete uptake of carbon dioxide from both sources बताएं at 20 डिग्री सेल्सियस. अब 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ये डार्क ब्लू वाला ग्राफ है, look at that. 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा rate of photosynthesis है, the rate of photosynthesis is somewhere between 3 and 2.9. Do we agree with this? That at 20 डिग्री सेल्सियस हमारा rate of photosynthesis ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ इज 2.9 और 3 के बीच में. सो हम उसकी वैल्यू लेते हैं 2.95. सही है? हमारे पास इसमें जो ये रेट आ रहा है, दिस रेट इज कमिंग from simply the uptake of carbon dioxide or the change in the concentration of atmospheric carbon dioxide. We need to add the carbon dioxide being produced during respiration to this, क्योंकि वो प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रही थी. नाउ एट 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? सो ओवर हियर एट 20 डिग्री सेल्सियस, लुक एट द ऑरेंज ग्राफ. हमारे पास एट 20 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0.55, 0.6, 0.65,
0.7, 0.65 और 0.7 के बीच में हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, विच इज अ वैल्यू ऑफ 0.675. So at 20 degrees Celsius, 0.675 milligram per hour of carbon dioxide was being produced. So this also is being used by the plant during photosynthesis. So 2.95 वो ले रहा है atmosphere से, and 0.675 आ रहा है जो respiration है उससे. So we'll add these two values, 2.95 plus 0.675. So rate of respiration से जो production of carbon dioxide हो रही है 20 degrees Celsius, that would be added to the rate of photosynthesis at 20 degrees Celsius. Make sense? Can you tell me what this is coming out to be? 3.625. अच्छा, हमारे पास जब भी यूनिट्स मेजर्ड नहीं हो तो हमारे पास क्या कहती हैं, इन दैट केस, सॉरी, डोंट, यूनिट्स मेंशन नहीं हो, हमें यूनिट्स मेंशन करने होता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द यूनिट्स यू आर नॉट गेटिंग द मार्क्स. तो हमारे पास रेट के जो यूनिट्स हैं इन बोथ द केसेस वो हमारे पास सेम है, तो हम एग्जैक्टली वही यूनिट्स लिखेंगे. Isn't the value at 20 for respiration around 1.4? हमारे पास, हम यहाँ से देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ रेस्पिरेशन वाला पार्ट. सो हमारे पास इस ग्राफ को अगर आप देखो एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये तो कंप्लीट ग्राफ भी 1 तक नहीं पहुंच रहा, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Nerve impulses can be transmitted along a myelinated motor neuron to a neuromuscular junction at fast speeds of up to 100 meter per second. Outline how a transmission speed of 100 meter per second is achieved by the neuron. Pretty straightforward. Schwann cells basically wrap the axon, producing or creating a myelin sheath which acts as an insulator. हमारे पास depolarization can only take place at the nodes of Ranvier. So the action potential jumps from one node of Ranvier to another node of Ranvier, and this conduction is known as the saltatory conduction, allowing for fast transmission of action potential. So Schwann cells wrap around different locations of the axon, creating the myelin sheaths, which acts as an electrical insulator. When a nerve impulse reaches the neuromuscular junction, acetylcholine is released and diffuses to the sarcolemma. Describe how the release of acetylcholine can result in the binding of calcium ions to troponin in the sarcomere. Okay, so the acetylcholine would bind to the receptors on the sarcolemma, and when it would bind to the receptors on sarcolemma, it would cause the depolarization of sarcolemma by opening the ligand-gated sodium ion channels. Once the sodium ion channels are open, the sarcolemma's depolarization is basically passed down to the E-tubule system, which in turn would cause the voltage-gated calcium ion channels of the sarcoplasmic reticulum to open, causing the calcium ions to diffuse from the sarcoplasmic reticulum to the sarcoplasm, and then the calcium ions would bind to the troponin. So acetylcholine. Do you guys know acetylcholine is actually the neurotransmitter for learning? So every time you guys are studying, your body is communicating via acetylcholine. ACH production. For that, I'll have to see what biological molecules are needed to make acetylcholine. That I don't know. I studied this in cognitive neuroscience, the different neurotransmitters and different for different purposes. Last part, and then we're done with this paper. So there's a question. Let me see.
Are there ligand-gated sodium ion channels of sarcolemma? Are they only on the synapse? There are ligand-gated sodium ion channels on the sarcolemma, which cause the depolarization of sarcolemma. Okay, muscle contraction can be affected by a low blood glucose concentration. Suggest how a low blood glucose concentration would affect the functioning of the sarcomere. Very easy. Tell me. If there is less glucose, what happens? How would a low blood glucose concentration affect muscle contraction or the functioning of sarcomere? Less ATP would be produced since decreased rate of respiration. ATP हमारे पास किन किन चीजों के लिए necessary होता है? ATP is important for the hydrolysis of ATP. ATP basically activates the myosin head or energizes the myosin head. Furthermore, the ATP has to bind with the actin myosin complex for the cross bridges to break. ATP is also needed for the calcium ion channels to be pumped back into the sarcoplasmic reticulum. So, if ATP is not being produced or it is produced less because low blood glucose concentration है तो हो सकता है थोड़ा बहुत ATP बन रहा हो. So decreased production of ATP would cause less breaking of the cross bridges, and if less cross bridges are broken हमारा muscle जो है वो बहुत देर तक contracted रहेगा, या in worst case scenario permanent contraction या paralysis भी हो सकता है. तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम ओस्ट्राकार्ड में भी लिख सकते हैं, या अगर आप ये कहना चाहते हो कि हमारे पास लेस एडीपी प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास क्या कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म ही नहीं होंगे बिकॉज एटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. एटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो मायोसिन हेड एनर्जाइज नहीं होगा फॉर फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज, which would in turn lead to a decreased sarcomere contraction or decreased number of power strokes. आप वो भी लिख सकते हो. सो यू कैन राइट इट बोथ वेज. परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन की भी आप बात कर सकते हो, या फिर आप बोल दोगे कि कम कॉन्ट्रैक्शन होगी क्योंकि एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा टू एनर्जाइज मायोसिन. मेक सेंस? So you can write either ways. कोई एक ही लिखना होगा because it's just for 3 marks. Less ATP is produced as there would be decreased rate of respiration. This in turn would result in a decrease breaking of cross bridges since ATP is needed to bind with myosin for it to detach from actin. A decreased ATP synthesis can therefore cause permanent contraction, or you can say paralysis. Clear? Any questions?